ओके मैम, मैंने लाइव कर दिया है, आपको होस्ट बना दिया। Thank you, sir. Thank you so much. Good afternoon, everyone. Here we are going to discuss two papers today. One which was dated 16 July. Okay, so this is a GAT paper dated 16 July. This was left over from last time. I think we discussed it. You guys didn't get a link or something, some sort of miscommunication happened, and that was that. And then after that, we'll discuss another paper from this weekend, the last weekend that we had, 11th standard GAT paper from last weekend. Okay, these are the two papers under discussion today. All right, here we go. The first paper, the one that we were discussing, the one from 16 July. Okay, so here it is. The very first question, which of the following is the source glacier of the river Yamuna? All right. Now, clearly, the river Yamuna is one of the major tributaries of the river Ganga. It is the longest tributary of the river Ganga, and we are trying to find the source glacier of the river. Okay. Now, very ideally, the answer should be Yamunotri. Okay, Yamunotri should be the answer. Just one moment. Okay, so we are saying Yamunotri should ideally be the answer. Okay, we are saying this is the answer. C should be the answer, but you should know that there is a thing here where we say that this glacier is the true source of the Yamuna river is the Champasar glacier, okay, which is located near the Kalin mountain, same place, Bandarpunch peak, okay, in Uttarakhand, but it has it is a kilometer higher than where the normal temple or the normal glacier is located, okay. So if you ever get this question, you should ideally know that Yamunotri glacier is the ideal answer, but there is another glacier which is considered Champasar glacier, which is considered as the actual point of origin, okay. It is Kalind mountain. It's famously situated in the Kalind mountain, and the Yamunotri shrine is situated a little below. The temple is situated a little below. Most people do not go there because it's a very difficult trek up there, up to the Champasar glacier. Okay, okay. So the answer for that should ideally be C, the Yamunotri glacier. Okay, C, Yamunotri glacier is the answer. Gangotri Glacier, we already know. It is also in the same place, Uttarkashi. Gangotri Glacier is the largest glacier of Uttarakhand, actually. It is situated in Uttarkashi district, जहाँ से भागीरथी river का source है. Okay, Gangotri, the Gomukh place. Okay, so we are saying that is the origin of the river Bhagirathi, which is considered as the one of the head streams of river Ganga. Okay, Alaknanda and Bhagirathi are two head streams of the Ganga. The source waters are considered those of the Bhagirathi, which starts from the Gangotri glacier. Okay, that's the Gangotri glacier for you. Zemu is the largest glacier in eastern Himalayas. Okay, if you're looking at the Arunachal Himalayas, Sikkim, it is at the base of Sikkim. कंचनजंगा के बेस पे है सिक्किम में. सो वी आर सेइंग झेमू जो है दैट इज अ ईस्टर्न हिमालयाज का लार्जेस्ट ग्लेशियर माना जाता है. एंड सियाचिन ग्लेशियर वी ऑलरेडी नो ईस्टर्न काराकोरम में है ये. इट इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इन द वर्ल्ड आल्सो, एंड काफी लंबा ग्लेशियर. इट्स ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर्स लॉन्ग और समथिंग लाइक दैट. ओके, सो दैट ग्लेशियर इज रियली लॉन्ग. सो दैट इज ग्लेशियर्स फॉर यू. Go to question number 52. Which of the following instruments is used to measure wind speed? आपके पास चार ऑप्शंस है, हाइग्रोमीटर, थर्मोमीटर, एनेमोमीटर एंड बैरोमीटर. ओके, नाउ अगर आप विंड स्पीड मेजर कर रहे हैं तो द ऑप्शन इज गोइंग टू बी एनेमोमीटर. ओके, एनेमोमीटर जो होता है वो विंड स्पीड मेजर करवाता है आपको. अगर आपको विंड डायरेक्शन चाहिए तो यू हैव विंड वेन्स एंड स्टफ लाइक दैट. ओके, वो ऑलरेडी पता है आपको, विंड वेन्स होते हैं. एनेमोमीटर एक्चुअली विंड स्पीड मेजर कराता है. हाइग्रोमीटर जो होता है वो ह्यूमिडिटी मेजर करता है. ओके, हाइग्रोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी, whereas thermometers is for temperature that we already know, and barometer is for atmospheric pressure. Okay, atmospheric pressure is measured with a barometer. All right. Now, since we are covering all of these elements of weather, all indicators and parameters of weather, humidity, temperature, atmospheric pressure, wind speed, wind direction and all, एक रेन का भी ये लेते हैं. रेनफॉल जब मेजर करना होता है आपको, तो उसके लिए आपके पास एक ओडोमीटर होता है. यू आइदर हैव एन ओडोमीटर और अ रेन गेज. ओके, रेन गेज और ओडोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द एक्चुअल रेनफॉल. वो एक्चुअल रेनफॉल मेजर करने के लिए होता है. ओके, GUA. ऑलराइट, so that is the rain gauge or odometer. So these are the various instruments through which you can measure
various parameters or various indicators of the weather. Okay. Consider question 53. To answer the question, question number 52, the answer should be anemometer. Okay, C anemometer. Okay, let's go to question 53. Consider the following statements. First, a monsoon climate is characterized by distinct wet and dry season influenced by seasonal wind reversal. Two, India's climate is significantly influenced by the southwest and northeast monsoons. And three, India's climate shows no seasonal variation throughout the year. Okay. Let's consider these statements. First of all, the very first statement says that monsoon climate is characterized by distinct wet and dry season influenced by seasonal wind reversal. Okay, we say yes to this. Yes, this is a very correct statement that the monsoon climate, we say India has a very typical monsoon climate in which we have a distinct wet season. Usually monsoons are considered wet and winters are considered dry. Okay, winters are pretty dry in India. Even summers are considered dry, but summer monsoon is considered as a extension of the summer. So we are going with dry winters. Okay, so we have a distinct wet and a distinct dry season, which is influenced by the seasonal wind reversal. Okay. Consider the second statement. India's climate is significantly influenced by the southwest and northeast monsoons. Yes, it is these monsoons that will bring in the wet season. They will usher in the wet season or the dry season that we are talking about. So these are those two winds. Okay. The southwest monsoon winds and the northeast monsoon winds. Okay. And lastly, India's climate shows no seasonal variation throughout the year. No, the statement doesn't make sense because we've already discussed that India has a proper distinct climates. Okay, so we distinct seasons. So we say that it does show seasonal variation. You normally start off with the summer, which is pretty hot. Okay, the summers are pretty hot in India and considered pretty dry also. Okay, with an occasional thunderstorm or something like that. So that is how summers in India usually go. Then that after that you go to the monsoons. Okay, from June to September you have monsoons. Say if you have from March to May, if you have the summer, then from June to September you have monsoons. Okay, now monsoons are typically very very wet. Okay, almost everywhere in India except the Coromandel coast, maybe you will get a pretty wet monsoon. Okay, it rains and everything. So clearly that is the monsoon period. Okay, after that we consider that there is a returning returning monsoon season. Okay, so we are saying that you have the retreating monsoon season. So that is what, October, November, that would be considered that season, wherein first of all the temperature remains very high in the early part of the month of October, and then later on clearly the how do you say, monsoon withdraws. Okay, that is essentially what we are saying. And lastly, we have the winter season. Okay, we have the proper northeast northeast winds or the winter season. Okay, so northeast monsoons is essentially winter season. It will give rain only to the Coromandel coast of India, this part of India. Okay, we are talking of, एक second. We are saying ki in the winters, only this part of India will receive rainfall, this one. Okay, the Coromandel coast will receive rainfall, this part of India will receive rainfall. And that is from the northeast monsoon winds. Okay, so that is, and for rest of the country, it is considered a pretty dry season. Okay, winters are dry in India normally. All right, so that is where you get your thing from. That is the seasonal reversal that we are saying. So India definitely shows a lot of seasonal variation throughout the year, that is given. So ideally we should go with statements 1 and 2. Okay, our answer should be statements 1 and 2 only. This is statements 1 and 2. Okay, this should be the answer. If you're considering a seasonal variation, if you're considering a seasonal wind reversal, wait a second. Look at this thing. Okay, this is the figure that we are looking for. The figure to the right is the monsoons in India. Okay, this is what the monsoons in India are going to look like. Let me tell you how this works. Okay, there is a reason why this wind is seasonally reversed. Okay, in summers the wind blows in a certain direction. In winters the wind blows in the exactly opposite direction. Okay, and there is a reason for this. We say that normally if you consider India on a world map, okay, if you consider here India on a world map, you are saying that what happens is that usually, first of all, try to understand that land and water are different in their nature and behavior, as in land will heat up also very quickly and it will cool down also very quickly. Okay, on the other hand, water does not heat up very quickly, neither does it cool down very quickly. Okay, it does not react that way, just like land does. All right, so what happens over here is essentially during the summer, as summer approaches, what happens is the sun starts to move towards the
northern hemisphere towards the Tropic of Cancer. Okay, that is where the sun is started to move. And clearly, this part, this Indian subcontinent, this land part in the northern hemisphere, gets a lot of insulation. Okay. Now, since that receives a lot of insulation and it has a concentration of land in this region, there's quite the concentration of land in this region, right? So, because of that, the land heats up very quickly. Okay, as and how the summer, reaches its peak, this land keeps on heating and heating. And clearly, if the land is heating up over here, if there is a high temperature, if there is high temperature region over here, then obviously this will also be a low pressure region. Okay, and this, on the other hand, the water over here, on the other hand, remains a low temperature high pressure region. Okay, low temperature high pressure region, we are saying the water usually remains somewhat like that. Okay, now what happens is that wind normally blows from a high pressure region to a low pressure region. Now here in this case, the water is the high pressure region, the Indian Ocean is the high pressure region, and the land is the low pressure region. Okay, so what happens is यहाँ के जो southeast monsoon, यहाँ के जो southeast trade winds होते हैं ना, they are ideally attracted to the northern hemisphere in the towards the low pressure region. Okay, so these southeast trade winds are going to divert or going to travel across the equator and go towards the northern hemisphere. Okay, जब वो क्रॉस कर लेते हैं, तो what happens is because of the Coriolis effect, इनका डायरेक्शन राइटवर्ड्स हो जाता है, थोड़ा राइट में कर्व हो जाते हैं ये विंड्स, एंड ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स करके ब्लो करने लगता है. ओके, एंड दीज आर द विंड्स दैट एक्चुअली गेट रेनफॉल टू इंडिया. हमारे यहाँ जो मानसून आते हैं, प्रॉपर रेनफॉल आता है जून टू सितंबर, वो यहाँ से आता है, साउथ वेस्ट मानसून विंड से आता है. ओके, सो यू आर लुकिंग एट दीज विंड्स. ऑलराइट, now once this is clarified, this is summer for you. Okay, let's see what happens in winter. In winter, I'm marking the equator over here. In winter, what happens is, hello, are you saying something? No. Okay. Okay. In winter, what happens is that clearly these winds, the situation is reversed, so the winds will also be reversed. When I say the situation is reversed, we say that in winter, clearly as the temperature starts to drop, okay, now the sun is going to try to move southwards. Okay, the sun is going to go from the equator towards the Tropic of Capricorn. That is where the sun's movement is. So now most of the insolation of the sun is concentrated in this region, okay, in the between the equator to the Tropic of Capricorn. So what happens is over here in the northern hemisphere, clearly the sun's insolation is not received directly, so temperatures start to fall. Okay, and when temperatures start to fall, the land starts to the land starts to develop very low temperatures. Okay, and clearly it is land, so it will cool down also very quickly. So यहाँ पर usually क्या हो जाता है, लो टेम्परेचर रीजन डेवलप हो जाते हैं. ओके, अगर लो टेम्परेचर रीजन होगा तो किस तरह का रीजन होगा, हाई प्रेशर. ओके, सो यू आर सेइंग मोस्टली अ लो टेम्परेचर हाई प्रेशर रीजन इज डेवलप्ड ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, whereas over here in the water, what you find is a low pressure high temperature region. Okay, so यहाँ पर usually आपको low pressure high temperature region नीचे मिल जाता है. Now विंड जो होगा वो हमेशा हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन जाता है, तो कहाँ जाएगा ये, द विंड्स डायरेक्शन इज गोइंग टू बी लाइक दिस. ओके, ये जो नॉर्मल नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन होता है वही इस विंड का डायरेक्शन हो जाता है. सो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स बन के फ्लो करता है, एंड उस चक्कर में वो इंडिया के ये कोरोमंडल कोस्ट पे जाके बारिश दे देता है, बिकॉज दीज विंड्स आर फुल्ली मॉइस्चर लेडन व्हेन दे क्रॉस द Bay of Bengal, and clearly they bring water to the eastern coast of India. Okay, southeastern coast of India. So that is essentially what happens. So this is the seasonal reversal. There is a reason why the winds are seasonally reversed, because of the difference in winter and summer conditions. Winter and summer के जो conditions होते हैं वो reverse हो जाते हैं. Land का heating and cooling winter and summer के साथ बदल जाता है, and उसकी वजह से obviously आपको wind reversal मिल जाता है, because wind will always travel from high pressure region to a low pressure region. Okay, that's the gist of the Indian climate actually. ठीक है, so like we discussed, the option is going to be 1 and 2 only. Okay, India does show great seasonal variation, तो हम third statement के साथ तो agree नहीं कर सकते. All right, moving on to question 54. We say in question 54, consider, no, question 54 is not asked. Let's go to question 55. Okay, the continental drift theory was proposed by Alfred Wegener. This was the first statement. The second statement says the theory suggests that continents that were once joined together in a single landmass called Pangea. And third statement says that the continental drift theory has been completely disproved by all subsequent scientific evidence. Okay.
All right. Now let's let's go back to considering the first statement again. The first statement says continental drift theory was proposed by Alfred Wegener. Yes, Mr. Wegener did propose this theory way back in 1912. That is when he proposed the theory. And the theory does suggest that the continents were once joined together in a single landmass called as Pangaea. Okay, that is very true. Look at this. Wegener did propose this theory way back in 1912. It was called as the continental drift theory. What Wegener was trying to say was that earlier there was one huge supercontinent which was called as Pangaea, and there was a super ocean or a mega ocean which surrounded it, and that ocean was called as Panthalsa. Okay, and then this Pangaea broke into two parts, Laurasia and Gondwana land. Okay, and then the water body in between them was called as the Sea of Tethys. Okay, and then each of these, both Laurasia as well as Gondwana land, started splitting into smaller parts, and all these parts started drifting away from each other. That is the whole point. That is the whole process of the continental drift theory. Okay, that is what he proposed, and he did provide you with ample evidence for it. Okay, he gave you a good amount of evidence, and all, very spot on evidence. As far as the evidence was concerned, it was very absolutely correct, absolutely accurate. So he gave you all this evidence for the theory. Okay, now clearly the third statement says that the continental drift theory has been completely disproved by all subsequent scientific evidence. Okay, we cannot agree with this sentence completely, the third statement completely, because what Wegener was right about was the process of the continental drift. He said, yes, definitely, the continents used to be together, then they drifted apart. Okay, and he gave the evidence also quite correctly. Okay, he provided quite accurate evidence. What Wegener did go wrong about was the forces that was involved, the mechanism of the drift. Okay, he said that it was the centrifugal force and the tidal forces which made the continents drift away from each other. That is not true. These forces obviously are not strong enough to make such an event. Make such events happen. We know very clearly that it is the convectional currents which are moving convectional currents moving in the asthenosphere that are moving the continents from place to place. They're, appearing like the continents are drifting or something. And now we have formulated a better theory over it, which we call as the tectonic plate theory. Okay, so we know of this, but we cannot say that the third statement is right in the sense that the continental drift theory has been completely disproved. ये तो नहीं बोल सकते, क्योंकि Wegener was very correct about the process, and Wegener was also correct about the evidence. Okay, he was just wrong about what kind of forces are making these continents drift apart. He wasn't aware of convectional currents, and he decided to cite centrifugal forces and tidal forces instead. Okay, so that was where he went wrong. He was partially wrong. So we are going to go with statements 1 and 2 are correct. Okay, we cannot agree with the third statement. Is this good, people? All right, moving forward, we have next question is going to be 59. Question 59. Okay, that is this question we are looking for. A cartogram is a map in which statistical data such as population is substituted for land area. Second statement says a topographic map shows elevation and terrain features using contour lines. And third statement says that topographic maps never show elevation information. Okay, let's try to understand this. What a cartogram is. A cartogram is basically a map in which that is true that whatever statistical data you're trying to show, say population or GDP or industrial growth or something like that. So such data, okay, you're looking at a statistical data. So that is substituted for the land area. Okay, so what does a world map look like, people? See, this is the world map. Okay, so the world map normally looks like this is the size and shape of a country. Okay, and true to its size and shape, normally we try to denote them into a world map. Okay, that is the essential idea of a world map. We are trying to go with the area size. Okay, the land area. The land area as the base, and that will determine the size of the country or the nation in that particular map. Okay, what a cartogram does is that it uses these statistics. Okay, whatever statistics that we are talking about, say like we discussed a population or say GDP or whatever, education, literacy. We are discussing various many different statistics. Okay, so we are saying that it takes these stats and uses that in lieu of the land area. Okay, so that is substituted for the land area, and essentially what you get is something like this. Okay, so this is the world population. Okay, you're describing the population of India, population of the world, and clearly the first country that makes an impact that stands out is going to be China and India. Okay, because they are very large in the map.
क्योंकि they hold the largest populations also, because clearly India and China both hold the largest. This is data from way back. Okay, this is not a recent map clearly. So we are saying clearly India and China used to still hold the largest populations of the world. So because of that, you can make out that India and China look so huge. Okay, that is the reason why India and China look so huge. The other countries over there, the area of that country is determined by the population that the country has. Okay, so based on that, now look at Australia, how small Australia is looking. Is Australia really that small? Obviously not, because here the baseline is not the land area, the baseline is the population. Okay, that is the basis on which these maps are made. So cartograms look different. Okay, they will stick to the shape of whatever the country, but they will not remain true to the size. The size over here is not determined by the land area of the country. It is determined by whatever statistic you are discussing. Okay, whether it is population or GDP or whatever. Okay, this is essentially what a cartogram looks like. So we'll go with the first statement to be absolutely correct, that a cartogram is a map in which statistical data is substituted for land area. Okay, this is very true. Let's look at the second one. A topographic map shows elevation and terrain features using contour lines. Okay, all right. This is what a topographic map is. Okay, what you can see over here, these pictures, these are all pictures of topographic maps. Okay, we've seen them before. A topographical map जो होता है, that is essentially a detailed two-dimensional flat drawing, okay, जो three-dimensional shape दिखाता है Earth का. All right, so clearly we have hills and valleys and stuff like that, right? You have ground elevations and man-made structures and stuff like that. तो वो सब कुछ आपको यूजुअली टोपोग्राफिकल मैप पे दिखा देते हैं. ओके, इट इज तो वो दिखाने का तरीका सिर्फ थोड़ा अलग होता है. व्हाट यू यूजुअली यूज टू शो दीज फीचर्स इज कंटूर लाइंस. ओके, ये जो ऐसे यू कैन मेक आउट these circular lines over here, these are called as contour lines. Okay, so these are imaginary lines which will connect the points of the exact same height above sea level. Okay, those are contour lines. तो वो वैसे lines से आप सारे same height के या same altitude के जो places हैं उनको connect कर लेते हो. Okay, अगर ये lines थोड़े पास पास होंगे तो clearly slope जो होगा वहाँ के उस feature का वो थोड़ा सा steep होगा. Okay, अगर ये lines थोड़े से दूर दूर होंगे तो clearly the slope is considered to be a little gentle. Okay, if the contour interval जो है आपका अगर वो थोड़ा सा वाइड होगा या बड़ा होगा तो क्लियरली स्लोप जेंटल होता है. इफ द लाइंस आर क्लोज बाय देन क्लियरली द स्लोप इज कंसिडर्ड टू बी अ लिटिल स्टीप. ओके, क्योंकि हाइट बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है. ओके, एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव शेडिंग एंड यू हैव इंडेक्स कंटूर्स एंड आप सिंबल्स एंड कलर्स यूज करते हो फॉरेस्ट को, वाटर बॉडीज को, अर्बन जोन्स, बाउंड्रीज वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए. ओके, दैट इज यूजुअली हाउ अ टोपोग्राफिकल मैप इज मेड. I'll show you an example of it. See, this is what we are seeing. If Okay. This is essentially, can you make out these lines over here? These are all called as contour lines. Okay. So these contour lines will, can you see these markings over here? Can you make out this number 1450 in the middle of this contour line? So this 1450, usually whatever in feet or something, will show you the height or the altitude of that particular line. Okay. This is the altitude of the place. This is the contour line which denotes an altitude of 1450 feet or something like that. Okay, that is essentially, so this definitely shows you proper markings for elevation. Okay, कभी कभी peaks वगैरह जो होते हैं ना उसके ऊपर भी markings आपको मिल जाते हैं कि यार ये ऐसे peak के ऊपर आपको दिखा देते हैं किसी this look over here, Mount Masi you can see, and it is what 1825. Okay, 1825 or 1835 feet. Okay, so these are spot elevations. इस तरह के spot elevations बताते हैं, ऐसे shadings कराते हैं. You can clearly make out what this looks like. So see over here, you can clearly see that the contour lines are widely spaced. Okay, they are widely spaced over here. So you know clearly that the slope is gentle. Okay, over here you can make out that the contour lines are very closely spaced. So clearly here the slope is going to be very steep. Okay, so topographical maps are used to, they represent the ground as you see in a 3D, the 3D information of the ground on a 2D paper. Okay, that is what essentially topographical maps are doing. And the third statement, so these two statements stand true. We say a cartogram is a map in which statistical data such as population is substituted for land area. And the second statement also, that a topographic map shows elevation and terrain features using contour lines. Okay, this is absolutely true. Third statement says that a topographic map never shows elevation information. That's not true. We just saw, right, that the contour lines had proper information like 1450 feet, or there was spot elevations, there was shading, there was, all sorts of contour intervals and spot elevation. So clearly this statement is not wrong.
this statement is not right. Okay, this statement is wrong. That topographical maps definitely show elevation information. Okay, we'll only go with 1 and 2. That is our answer. All right, moving forward, we go to next question. Question 64. We'll go to question 64. Okay, the third statement is obviously on the next page. Let's see. Consider the following statements. The Arctic Circle marks the southern boundary of the Arctic polar region. The regions within the Arctic and Antarctic Circle experience continuous daylight or darkness for part of the year. And the Antarctic Circle is located near the North Pole. Okay, this is the third statement. The Antarctic Circle is located near the North Pole. Okay, let's examine these statements. We say that the Arctic Circle, let's examine the first statement. The Arctic Circle marks the southern boundary of the Arctic polar region. Okay, so we say this is the Earth. Okay, this is the equator. This is the Arctic Circle. Okay, let's say this is the Arctic Circle. This is the Antarctic Circle. I'll call this ARC and I'm calling this ANC, Antarctic Circle. Okay, this is what I'm calling them. So the first statement says that the Arctic Circle marks the southern boundary of the Arctic polar region. Yes, this is supposed to be the Arctic polar region. Okay, this region is supposed to be the Arctic polar region. Okay, towards the north. So this is the North Pole. All right. So we are saying this is the Arctic polar region. Clearly, the Arctic Circle will mark the southern boundary of it. Okay, and regions within the Arctic and Antarctic circles experience continuous daylight or darkness for part of the year. This statement is also true. Okay. Now, this is related to the apparent movement of the sun. We had earlier discussed this, but I'll tell you again that what we call as the apparent movement of the sun is the sun's movement between the tropics throughout the calendar year. So these are the tropics. This is the Tropic of Cancer. This is the Tropic of Capricorn. And we are saying the sun moves between these two tropics continuously. Okay. It passes over the equator twice and every other region within the tropics twice. And it's on the tropics at least only once a year. Okay. So we are saying that because of this movement, when the sun is moving, so let's say the sun goes from the equator towards the Tropic of Cancer. Okay. On the day in the northern hemisphere, the sun is on the Tropic of Cancer on 21st June. Okay, that is the day. In northern hemisphere, we call that date as summer solstice. Okay, when it is summer solstice in the northern hemisphere on 21st June, what happens is that the sun is exactly 90 degrees over the Tropic of Cancer. Okay, and clearly it gives out rays. It completely illuminates the northern hemisphere. Okay, that is what essentially it is doing on that day. It is illuminating the northern hemisphere completely. Okay, so now what happens is this day, on that day, on the Arctic Circle, the sun never sets at all. Okay, you will witness 24 hours of daylight on this Arctic Circle. Okay, so the sun does not set, you will witness 24 hours of daylight. And as and how when the sun is traveling from the equator towards the Tropic of Cancer during this 3-month period, as and how the sun starts to move more and more towards the north, more and more towards the Tropic of Capricorn, the length of daylight will start to increase in this region. Okay, so ideally on the North Pole and the South Pole, the both the North Pole and the South Pole will witness 6 months of daylight and 6 months of darkness. Okay, that is the funda. And then जितना आप latitude में ऊपर ऊपर की तरफ जाते हो, the higher latitudes you go in, the more the number of daylight, days of daylight and days of darkness. Okay, so summers थोड़े से वो दिन थोड़ा सा extend ही हो जाता है आपका. तो the closer you get to the poles, वो जो 3-4 महीने होते हैं आपके daylight के या darkness के, वो increase होते जाते हैं. Okay, that is essentially what happens. So we are saying कि this is absolutely true. The regions within the Arctic and Antarctic circles जो होते हैं, वो continuously daylight या darkness experience करते हैं. And when I say daylight or darkness, it is essentially the daylight is also like dawn के time पे जैसा light होता है ना, वैसा daylight throughout होता है for 3 months or 4 months. Okay, and darkness meaning वो जो dusk के time पे darkness होता है ना, वैसा वाला darkness हो जाता है for 3 to 4 months or 1 month or 2 months or whatever. Okay, so I'm just saying that the duration of this interesting extended daylight or continuous darkness वगैरह जो होता है, वो जो duration होता है वो हायर लैटिट्यूड्स में ज्यादा होने लगता है. द हायर द लैटिट्यूड, मोर द ड्यूरेशन. ओके, दैट इज एसेंशियली द फंडा. एंड लास्टली, you have the Antarctic Circle is located near the North Pole. No, Baba. The Antarctic Circle is not located near the North Pole. Antarctic Circle is located near the South Pole, right? This is the South Pole. So Antarctic Circle is located in the South Pole. And the first two statements will stand true, that the Arctic Circle marks the southern boundary and regions within Arctic and Antarctic circles will experience continuous daylight or darkness. Okay, this will hold true. So ideally we should go with D, 1 and 2 only.
We are going with D 1 and 2. All right, moving forward. Here, question number 68. The Survey of India, responsible for mapping the country, has its headquarters in Kolkata, New Delhi, Dehradun, or Mumbai. The Survey of India is responsible for mapping the country. That is absolutely true. It is the national mapping agency. Whatever official topographical maps or political maps or whatever maps you get are all done by the Survey of India. Okay, they officially come from the Survey of India, or they have to be approved by the Survey of India if you are a state agency doing that. Okay, so we are saying that this is the Survey of India, which is responsible for making all the official maps of the country, and this was established in 1767. Okay, it was established. This is during the British Empire, right? So we are saying 1767 में established किया था. It is the oldest scientific department in India also, and उसके headquarters आपको यहाँ मिलते हैं. C देहरादून. Okay, C देहरादून में मिलते हैं उसके headquarters. Please remember oldest scientific department. Okay, go to question 69. Latitude and longitude form a coordinate system used to specify locations on the Earth. Lines of latitude run parallel to the equator. Lines of longitude run parallel to the equator as well. Okay, let's see. Latitude and longitude coordinate system होते हैं. हाँ जी, बिल्कुल. We are saying if this is the Earth, तो ये रहा equator. Equator खुद एक latitude है. And latitudes जो होते हैं उनको parallels of latitude बुलाते हैं. वो ऐसे होते हैं. Okay, they are lines, they are circles actually, जो parallel होते हैं to the equator. Okay, they run parallel to the equator. तो ये तो सही है. Okay, and lines of longitude जो होते हैं वो नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक रन करते हैं. सेमी सर्कल्स दैट रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. ओके, सो दीज विल बी कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूड्स. इनको लॉन्जिट्यूड्स बुलाते हैं. तो ये थर्ड स्टेटमेंट तो गलत हो गया कि लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड दे डू नॉट रन पैरेलल टू द इक्वेटर. ओके, लेट्स कंसीडर द फर्स्ट स्टेटमेंट. लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड जो होते हैं दे फॉर्म ए coordinate system used to specify locations on earth. That is absolutely true. जब आपको एक latitude और longitude का combination दिया जाता है तो वो जहां कहीं intersect करता है. Let's say we are talking about this longitude and this latitude. Okay, तो ये दोनों जहां intersect करेंगे तो वो जो लोकेशन होगा वो उस लोकेशन को पिन पॉइंट करते हैं. ओके, हर लोकेशन का अपना खुद का एक unique latitude longitude combination होता है. Okay, every location in the world will have its own unique latitude longitude combination, and that is what we are talking about. Okay, अगर इन दोनों को साथ कंसिडर किया, latitude longitude को, ये जो इस तरह का नेटवर्क बनाते हैं उसको ग्रिड या ग्रेटिक्यूल बुलाते हैं, एंड वो यूजुअली प्लेसेस के लोकेशन को पॉइंट आउट करने के लिए ही होता है. ओके, so we are going with statement 1 and 2 is correct and third is not, so we'll go with option D. Option D is right. Okay, next we go to, फिर ये वाला है हमारे पास 77. Okay, which mountain range causes a pronounced rain shadow effect on the Deccan Plateau's interior? हम डेक्कन प्लेटो के इंटीरियर में कौन सा माउंटेन रेंज है जो प्रोनाउंस्ड रेन शैडो इफेक्ट देता है? आपके ऑप्शंस आर विंध्यास, वेस्टर्न घाट्स, सातपुड़ास एंड ईस्टर्न घाट्स. ओके, विंध्यास, सातपुड़ास, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स. ओके, ये रहा आपका इंडिया का मैप. ओके, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया. This is the, ये रहे विंध्यास, this is the विंध्या range, this is the Satpura range. Okay, the Vindhyas and Satpuras. ये रहे western ghats, these are considered the western ghats, and these are the eastern ghats. Okay, ये जो है ये eastern ghats माने जाते हैं. Now आपको इन चारों में से बताना है कि डेक्कन प्लेटो में इंटीरियर में जब रेनफॉल नहीं आता है तो वो किस माउंटेन रेंज की वजह से आता है. वी नो वेरी वेल कि इंडिया का जो मेजर मानसून है, या अदर डेक्कन प्लेटो का जो मानसून है और अदर रेनफॉल है वो बेसिकली साउथ वेस्ट मानसून विंड से आएगा. ओके, सो दिस इज दैट ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स. ये वाली जो है ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच है. दिस इज द बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड दिस इज द अरेबियन सी ब्रांच. ओके, इस वाली ब्रांच को अरेबियन सी ब्रांच बुलाएंगे. तो हमारा कंसर्न अरेबियन सी ब्रांच से है मोस्टली, क्योंकि वी आर कंसर्न विद द डेक्कन प्लेटो. ओके, तो ये अरेबियन सी ब्रांच जो होती है वो ऐसे निकलती है, इसी डायरेक्शन में निकलती है, एंड इट वांट्स टू गो टुवर्ड्स दिस साइड. ओके, बीच में आ जाते हैं वेस्टर्न घाट्स. तो वेस्टर्न घाट्स जो होते हैं वो बैरियर करके काम करते हैं. तो वेस्टर्न घाट्स का ये जो विंडवर्ड साइड है ना, इस तरफ का कोस्टल साइड, वेस्टर्न कोस्टल साइड ऑफ इंडिया जो है, वहां पे आपको बड़ी सारी बारिश मिल जाती है, बिकॉज दैट इज द विंडवर्ड साइड. ओके, ये वाली साइड जो है डेक्कन प्लेटो वाली जो साइड है,
दैट बिकम्स द लीवर्ड साइड, ओके, वो यहाँ की लीवर्ड साइड बन जाती है वेस्टर्न घाट्स की, इसलिए इंटीरियर में थोड़ी कम बारिश आती है, ओके। तो वेस्टर्न घाट्स इज द प्रॉब्लम, वेस्टर्न घाट्स इज द प्रॉब्लम, माने दैट इज द आंसर फॉर यू, कि इनकी वजह से इंटीरियर ऑफ डेक्कन को यूजुअली ज्यादा बारिश नहीं मिलती, ओके। ईस्टर्न घाट्स वैसे भी बारिश रोकने के मूड में नहीं थे, बिकॉज वो वेस्टर्न घाट्स के राइट हैंड साइड को आते हैं, एंड वो ऑलरेडी लीवर्ड साइड में आते हैं वेस्टर्न घाट्स के, ओके। एंड ये बे ऑफ बंगाल की बारिश को रोकने की कोशिश भी नहीं करेंगे बे ऑफ बंगाल की ब्रांच को, बिकॉज बे ऑफ बंगाल की ब्रांच सीधा यहाँ ऊपर जाएगी एंड देन थोड़ा सा लेफ्टवर्ड्स जाएगी, ओके। दिस इज एसेंशियली व्हाट इज डूइंग, तो ईस्टर्न घाट्स कोई मेजर बैरियर नहीं फॉर्म करते। एंड विंध्यास एंड सातपुड़ास जो है वो तो डेक्कन प्लेटो का मोस्टली ऐसा नॉर्दर्न बाउंड्री फॉर्म कर रहे हैं ना, दे आर द नॉर्दर्न बाउंड्री फॉर इट, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ओके, दैट इज ओके। वो वैसे भी बारिश को रोक नहीं रहे वहां से, बिकॉज बारिश का डायरेक्शन ही वहां से नहीं है। सो आवर आंसर शुड आइडियली बी वेस्टर्न घाट्स, ओके। वेयर इज वेस्टर्न घाट्स, बी वेस्टर्न घाट्स शुड बी आवर आंसर, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वील गो टू 94, क्वेश्चन 94। Okay, we say a glacier is a large, slow-moving mass of ice formed from compacted snow. Glaciers are found in high altitude and polar regions, and glaciers are generally found in low altitude desert regions. Okay, तीन statements दिए हैं आपको. We are trying to figure out what is what. Give me a moment. Okay, let's figure. We say that ये जो है ग्लेशियर जो होता है वो लार्ज स्लो मूविंग मास ऑफ आइस है फॉर्म फ्रॉम कॉम्पैक्टेड स्नो, एब्सोल्युटली करेक्ट. What happens is that whenever there is a snowfall and the snow accumulates and compacts and hardens, okay, तब वो जाके ice बनाता है. It forms a huge mass of ice, and वो large slow moving mass of ice जो होता है which is moving down due to gravity, moving along the slope due to gravity, उसको हम ग्लेशियर बुलाएंगे. Okay, that is essentially what a glacier is. We say कि snowfall होता है, स्नो जमा हो जाएगा, it will get compacted, it will get hardened into ice, proper hard ice, and then when the weight of the ice becomes large enough so that it won't hold in place at that point, then clearly that glacier starts to move downwards, okay. So it's a large slow moving mass of ice formed by compacted snow. So ये वाला statement absolutely correct है. Second statement देखते हैं. The glaciers are found in high altitude and polar regions. Correct. हमने अभी अभी डिस्कस किया कि स्नो से बनता है आइस, ओके. स्नोफॉल होगा, स्नो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, तब जाके आइस बनेगा, ओके. तो क्लियरली अभी अगर आपको स्नोफॉल चाहिए तो आपका जो कंडेंसेशन है, जिसमें यू नो द मॉइस्चर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर, तो वो वाला जो प्रोसेस है दैट हैज टू हैपन बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ओके. मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे होना चाहिए ये. तो ये तो सिर्फ हाई ऑल्टीट्यूड एंड पोलर रीजन्स में ही हो सकता है ना. दिस कैन हैपन इन हाई ऑल्टीट्यूड एंड पोलर रीजन्स ओनली, ओके. सो वी आर सेइंग कि यस, डेफिनेटली ग्लेशियर्स आर गोइंग टू बी फाउंड ओवर देयर. इफ यू सी दैट स्नोफॉल होना चाहिए, द प्रेसिपिटेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ स्नो, then clearly the temperature at which condensation happens also has to be below the freezing point. तो वो आपको बहुत हाई ऑल्टीट्यूड्स में एंड पोलर रीजन्स में ही मिल जाएगा, ओके. ग्लेशियर्स आर जनरली फाउंड इन हॉट लो ऑल्टीट्यूड डेजर्ट रीजन्स नहीं. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हॉट डेजर्ट रीजन्स जो होते हैं, लो ऑल्टीट्यूड हॉट डेजर्ट रीजन्स, वहां पे इन द फर्स्ट प्लेस बारिश के ही बहुत प्रॉब्लम्स है, ओके. द होल डेफिनेशन ऑफ अ डेजर्ट रीजन इज कि it is the deserts are not defined by their temperature. Deserts are usually defined by their aridity or lack of rainfall. Okay, that is essentially what deserts are. Desert माने वो प्लेस जहाँ बारिश नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा क्या, बहुत कम बारिश हो रही है. That is what you are saying. Okay, स्कैंटी रेनफॉल के लिए, स्कैंटी रेनफॉल से कैरेक्टराइज होते हैं डेजर्ट रीजन्स. सो अगर वो हॉट डेजर्ट, हॉट लो लैटिट्यूड, लो ऑल्टीट्यूड डेजर्ट रीजन होगा, तो क्लियरली वहां पे तो बारिश भी नहीं होगी, लेट अलोन अ ग्लेशियर, ओके. तो वो नहीं फॉर्म होगा यहाँ पे. आपको ग्लेशियर, ऐसा नहीं है कि ग्लेशियर्स आपको यू नो लो लैटिट्यूड या इक्वेटर के पास वगैरह नहीं मिलते. अब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लैटिट्यूड्स एट ऑल ओवर हियर. हमारा कंसर्न सिर्फ ऑल्टीट्यूड से है. इनफैक्ट इक्वेटर पे भी आपको ग्लेशियर्स मिल जाते हैं, लेकिन यू जस्ट द ग्लेशियर्स कैन ओनली बी फॉर्म्ड अबव द स्नो लाइन, ओके. स्नो लाइन के ऊपर ग्लेशियर्स मिल जाएंगे. माने अगर अभी आपको इक्वेटर के पास आपको बहुत वो टॉल माउंटेन्स नहीं है, किलिमंजारो एंड माउंट केनिया एंड ऑल, वहां जाना पड़ेगा टू फाइंड ग्लेशियर्स, ओके. So the height is what, 4.5 kilometers I think. Snow line का जो altitude है that is 4.5 kilometers. मतलब सी लेवल से 4.5 किलोमीटर ऊपर जाके फाइनली आपका ग्लेशियर्स बनना शुरू हो जाता है. तो उतना टॉल माउंटेन होगा तो वहां पे ग्लेशियर बन जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम, ओके. सो यूजुअली
वो द माउंटेन्स दैट वी मेंशन, किलिमंजारो केनिया, वहां पे आपको स्नोफॉल भी मिलता है, ग्लेशियर्स भी मिल जाएंगे, स्नो कैप पीक्स भी मिल जाएंगे। ओके, बट क्लियरली ग्लेशियर्स का प्रॉब्लम लैटिट्यूड कभी नहीं था, ग्लेशियर्स का प्रॉब्लम हमेशा ऑल्टीट्यूड है, दैट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। इफ यू आर हाई एनफ, इफ यू आर अबव द स्नो लाइन, स्नोफॉल होगा तो अपने आप वो स्नो कॉम्पैक्ट होके आइस बन जाएगा एंड ग्लेशियर्स बन जाएंगे। ओके, we'll go with option A, 1 and 2 only. All right. All right. Moving forward. Um, Question 97. Let's look at question 97. A rain shadow region lies on the leeward side of a mountain, receiving relatively high rainfall, receiving relatively little rainfall. Second statement says the region east of the Western Ghats, interior Deccan, is a well-known rain shadow area in India. And three, rain shadow regions receive the highest rainfall in the region. Okay, ये तो हमने अभी अभी डिस्कस किया। हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी माउंटेन का लीवर्ड एंड विंडवर्ड रीजन एंड रेन शैडो रीजन क्या होता है। ओके, ये रहा आपका माउंटेन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द विंड, मॉइस्चर बेरिंग विंड्स इस तरफ से आ रहे हैं। ओके, तो ये जो माउंटेन है वो बैरियर करके काम करता है, एंड इस तरह का जो रेनफॉल होता है उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल बुलाते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ दिस रेनफॉल इज गोइंग टू हैपन। वी से ये विंड्स है, मॉइस्चर बेरिंग विंड्स है, वो उनके रास्ते में ये माउंटेन आ जाता है। ओके, अभी वो माउंटेन के थ्रू नहीं जा सकते, सो द ओनली ऑप्शन दैट दीज हैव इज टू असेंड। ओके, तो दे विल हैव टू क्लाइंब द माउंटेन, इनको ये माउंटेन से ऊपर जाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे विंड्स ऊपर राइज करते हैं तो हवा कूल हो जाएगी। ओके, हवा कूल हो जाएगी, एक्सपांड हो जाएगी, तो थोड़ा सा ऑब्वियसली उसका प्रेशर कम हो जाता है, उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, एंड देन क्लियरली इट विल रीच सैचुरेशन। सैचुरेशन पे रीच करेगा तो कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा तो अपने आप यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाएगा। ओके, सो इट स्टार्ट्स टू रेन। ओके, कंडेंसेशन होगा, क्लाउड्स बनेंगे तो बारिश होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। ओके, तो ये वाली जो साइड होती है उसको विंडवर्ड साइड कहते हैं। ओके, दिस इज फेमसली कॉल्ड एज द विंडवर्ड साइड। तो विंडवर्ड साइड पे आपको बारिश मिलती है। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, ये विंड्स ना क्रॉस कर लेते हैं माउंटेन को। ओके, दीज विंड्स क्रॉस द माउंटेन एंड वो यहाँ से नीचे डिसेंड करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये विंड्स माउंटेन से नीचे डिसेंड करना शुरू कर देते हैं, क्लियरली उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ओके, क्योंकि कंप्रेस हो रहे हैं वो विंड, अभी प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हवा कंप्रेस हो जाएगी, एक्सपांड नहीं होगी, हॉट हो जाने लगती हवा। ओके, द एयर स्टार्ट्स टू बिकम वार्मर, एंड वार्मर एयर जो होगी वो आपको कभी भी उसका अपने आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है। ओके, उसका कम हो जाता है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगा तो कंडेंसेशन के चांसेस नहीं बचते उसके बाद। ओके, सो इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस ऑन द लीवर्ड साइड, इस साइड को लीवर्ड साइड बुलाते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होने लगता है तो क्लियरली बिकॉज द टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज, हेंस द रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस एंड कंडेंसेशन के चांसेस थोड़े थोड़े कम होने लगते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी कम बारिश मिलती है। ओके, यू डोंट गेट अ लॉट ऑफ रेनफॉल, यू गेट अ लिटिल लेस रेनफॉल। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द लीवर्ड रीजन और द लीवर्ड साइड और द रेन शैडो रीजन। ओके, तो किसी भी माउंटेन का जो रेन शैडो रीजन होता है उसको हमेशा कम ही बारिश मिलती है एज अपोज टू द विंडवर्ड रीजन। ओके, वो जो विंडवर्ड साइड है वहां पे ज्यादा बारिश मिलेगी, लीवर्ड या रेन शैडो रीजन जो होता है उस पे कम बारिश मिलती है, वहां पे कम बारिश मिलती है। ओके, एंड ये तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि लीवर्ड साइड पे आपको रिलेटिवली लिटिल रेनफॉल मिलता है, एंड द रीजन ईस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, इंटीरियर घाट, इज अ वेल नोन रेंज। अभी अभी देखा ना हमने मैप में कि इंटीरियर डेक्कन जो है ईस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, तो वो एक वेल नोन रेन शैडो रीजन है इंडिया का। ओके, एंड रेन शैडो रीजन्स हैव ऑलवेज रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन अ रीजन? नो, दे डू नॉट रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल, क्लियरली उनको कम रेनफॉल मिलता है। ओके, so we are going with option 1 and 2 only. Okay, हम सिर्फ 1 and 2 options के साथ जाएंगे, we'll say that only options 1 and 2 are correct, so वही करेंगे हम लोग सिर्फ। Okay, so we'll go here, this is going to be our option। Okay, we are going with options 1 and 2 only, third is incorrect। Okay, ठीक है। Next question is going to be this one. We are looking at question 105. The prime meridian which passes through Greenwich, England, is at 0 degrees longitude, 90 degrees longitude, 180 degrees longitude, and 0 degrees latitude. Okay, we are discussing the prime meridian. अब prime meridian जो है अपना वो ग्रेनिच से पास करता है, दैट इज ट्रू, इंग्लैंड में, लंदन के करीब है ये जगह, इट्स अ स्मॉल विलेज क्लोजर टू लंदन। वो इट पासेस थ्रू 0 डिग्रीज लॉन्जिट्यूड, उसका आंसर ये है, प्राइम मेरिडियन जिसको हम बुलाते हैं वो 0 डिग्रीज लॉन्जिट्यूड।
वो 0 डिग्रीज लॉन्जिट्यूड पे होता है, ओके। एंड उसके हम प्राइम मेरिडियन को इसलिए डिफाइन करते हैं क्योंकि हम प्राइम मेरिडियन के रेफरेंस से बाकी सारे टाइम जोन्स डिफाइन करते हैं ऑल द वर्ल्ड ओवर, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन देख लो तो हम कहते हैं कि वी आर GMT प्लस 530 आवर्स, है ना। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन इज डिफाइंड एज GMT प्लस 530 आवर्स, ओके। तो GMT प्लस 530 आवर्स मीनिंग व्हाट, कि हम GMT पे जो भी टाइम हो रहा है या प्राइम मेरिडियन पे जो भी टाइम हो रहा है उसके 5.5 घंटे आगे चलते हैं, ओके। वी आर 5.5 आवर्स अहेड ऑफ दैट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर GMT पे अभी 12 बजे होंगे, दोपहर के 12, तो हमारे यहाँ दोपहर के शाम के 5:30 बज रहे हैं, ओके। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। GMT इज द टाइम, GMT या UTC बुलाते हैं, ओके। GMT या UTC बुलाते हैं, वी कॉल दैट, वो जो टाइम हो रहा है लोकल टाइम एट द प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम UTC और ग्रेनिच मीन टाइम GMT, ओके। इस नाम से बुलाते हैं एंड वो हमेशा रेफरेंस टाइम होता है फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड, ओके। ठीक है। 180 डिग्रीज लॉन्जिट्यूड पे आपको आइडियल मिलता है, इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसको ईस्ट टू वेस्ट क्रॉस करो, वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस करो, डेट एग्जैक्टली एक दिन से बदल जाती है, ओके। कैलेंडर डेट जो होती है वो एग्जैक्टली एक दिन से बदल जाती है। तो दैट इज एसेंशियली द आइडियल, ओके। वो 180 डिग्रीज लॉन्जिट्यूड पे आता है। याद है ना, हमने डिस्कस किया था, इट इज अ जिगजैग लाइन, सिर्फ पानी में से पास करता है, लैंड में से नहीं पास कर सकता है। कंट्रीज कैन चूज टू बी ऑन आइदर दिस साइड और दैट साइड ऑफ द आइडियल, स्पेशली स्मॉलर आइलैंड्स जो होते हैं विच आर वेरी क्लोज टू द आइडियल, depending on the for their social, cultural, economic, financial reasons, they can choose to be on either side of the ideal and so on so forth. Okay, तो आइडियल को क्रॉस करना, आइडियल को क्रॉस करने से डेट एग्जैक्टली एक दिन से बदल जाती है, इसलिए हम उसको आइडियल बुलाते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, ओके। देन 90 डिग्रीज लॉन्जिट्यूड का कोई खास ये नहीं है, बांग्लादेश एंड भूटान का टाइम जोन है वो 90 डिग्रीज लॉन्जिट्यूड पे, हमारा जैसे 82.5 डिग्रीज ईस्ट का है, वैसे 90 डिग्रीज ईस्ट पे बांग्लादेश एंड भूटान का टाइम जोन है। 90 डिग्रीज वेस्ट का मुझे पता नहीं किसका टाइम जोन है, ओके। एंड 0 डिग्रीज लैटिट्यूड पे आपको इक्वेटर मिलता है, ओवर हियर यू फाइंड द इक्वेटर, इक्वेटर इज फाउंड एट 0 डिग्रीज लैटिट्यूड, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 0 डिग्रीज लैटिट्यूड, ओके। These are your various latitudes and longitudes. 211. Okay. Which ocean current is known for keeping northwestern European climate mild despite its high latitude? Your options are California current, Labrador current, Gulf Stream and Humboldt current. Okay. आप चार currents को देख रहे हो, कैलिफोर्निया, गल्फ स्ट्रीम, लैब्राडोर एंड हम्बोल्ट, ओके। इसमें से कौन सा ओशन करंट होता है जो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोपियन क्लाइमेट को माइल्ड रखता है डिस्पाइट इट्स हाई लैटिट्यूड? हाई लैटिट्यूड है तो क्लियरली कोल्ड क्लाइमेट होगा, ओके। तो कोल्ड क्लाइमेट को माइल्ड रखने के लिए आपको वार्म ओशन करंट चाहिए, राइट, अग्रीड। सो दैट ओशन करंट शुड बी वार्म। अब आपके पास वार्म ओशन करंट्स के ऑप्शंस ही कितने हैं यहाँ पे? कैलिफोर्निया करंट इज कूल, लैब्राडोर करंट इज वेरी कोल्ड, हम्बोल्ट करंट इज ऑल्सो वेरी कोल्ड। आपके पास इकलौता वार्म करंट इज गल्फ स्ट्रीम ओवर हियर, ओके। एंड आइडियली वो गल्फ स्ट्रीम भी नहीं है, आइडियली उसका ये जो है एक्सटेंशन जो है जिसको हम लैब्राडोर करंट बुलाते हैं वो होना चाहिए, ओके। वी आर सेइंग दिस इज द इक्वेटर, ये इक्वेटर है। तो क्या हो जाता है यहाँ से आपका, दिस इज द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ओके। वो यहाँ से फ्लो करता है, वो यहाँ से टर्न हो जाता है बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द लैंड एंड कोरियोलिस फोर्स एंड ऑल, उसकी वजह से वो बदल जाता है और यहाँ से फ्लो करेगा एज द एंटिल्स करंट, ओके। यहाँ से वो एंटिल्स करंट बन के निकलता है, फिर यहाँ से वो फ्लोरिडा करंट बन के निकलता है, दिस इज द फ्लोरिडा करंट, ये वाला फ्लोरिडा करंट है। और ये वाले स्ट्रेच में उसको गल्फ स्ट्रीम बुलाते हैं, फेमसली इन दिस स्ट्रेच यू कॉल इट एज द गल्फ स्ट्रीम, ओके। अब यही ऊपर से आता है आपका लैब्राडोर करंट, ओके। यहाँ से जो आएगा वो लैब्राडोर करंट होता है, LC बुला रही हूँ मैं उसको, ओके। एंड इसी गल्फ स्ट्रीम का आगे जो एक्सटेंशन होता है दैट इज फेमसली कॉल्ड एज द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ओके। उसको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बुलाते हैं। तो ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो होता है वो जब वो वार्म करंट है, तो वो विंटर्स में जब वो नॉर्थ सी वगैरह रीजन्स में जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप की तरफ जाता है, तो टेम्परेचर्स, लैंड के टेम्परेचर्स इतने कूल डाउन हो चुके होते हैं कि सी भी काइंड ऑफ थोड़ा सा फ्रीज हो जाना चाहिए, ओके। द सी शुड ऑल्सो फ्रीज आउट। तो अगर सी फ्रीज आउट हो गया तो पोर्ट्स तो बंद हो जाएंगे, राइट, आपके। एंड दिस इज अ मैरिटाइम प्लेस, लाइक यहाँ पे ट्रेड, ओशन से ट्रेड, वाटर से इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू वाटर्स इज अ वेरी कॉमन थिंग टू डू इन द नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी है आसपास। तो ये वाला जो करंट होता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसके वार्म ओशन ओशन वाटर्स जो होते हैं वो क्लियरली ये प्लेस को आइस फ्री रखते हैं, ओके। ये सारे पोर्ट्स को एंड वो सारी सी को ऑलमोस्ट आइस फ्री रखते हैं, जिसकी वजह से ट्रेड बहुत आसान हो जाता है। आपको सेपरेटली खर्चा करके आइस को तोड़ ताड़ के फिर वो ट्रेड नहीं करना पड़ेगा या शिप्स को अंदर बाहर नहीं लाना पड़ेगा, ओके। सो क्लियरली द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इज गुड लाइक दैट। इसी का एक एक्सटेंशन होता है ऊपर नॉर्वेजियन करंट, दिस इज द नॉर्वेजियन करंट जो ऊपर जाता है, एंड एक उसका नीचे
एक एक्सटेंशन जो आएगा दैट विल बी द कनारी करंट, ओके, नीचे आने वाला जो करंट है दैट इज गोइंग टू बी द कनारी करंट, ओके। तो ये कनारी करंट कूल कूल हो जाएगा, लेकिन ये जो नॉर्वेजियन करंट है वो क्लियरली थोड़ा सा वार्म होता है। तो ये स्कैंडिनेवियन रीजन्स को भी थोड़ा सा वार्म रखता है, डिस्पाइट द एक्सट्रीमली सिवियर एंड कोल्ड वेदर। ये नॉर्वेजियन करंट भी थोड़ा सा वार्म ही रखेगा चीजों को, ओके। ठीक है, इज दिस क्लियर? सो ये रहा आपका गल्फ स्ट्रीम, एंड गल्फ स्ट्रीम का जो एक्सटेंशन है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, विच कीप्स द northwestern European parts a little, they have a better climate, because a better climate, despite the severe weather, despite the severe climate, severe winter, उनका फिर भी पोर्ट्स आइस फ्री रहते हैं, एंड थोड़ा सा गर्मी भी मेंटेन होता है वहाँ पे, थोड़ी सी हीट तो रहती है वहाँ पे, ओके। कौन से दो करंट्स और सोच रहे थे? तीन करंट्स वी वर डिस्कसिंग, द कैलिफोर्निया करंट, दिस इज द कूल कैलिफोर्निया करंट, ये वाला जो करंट है ये कैलिफोर्निया करंट है, कैलिफोर्निया की तरफ से नीचे आता है कूल कैलिफोर्निया करंट। ये रहा हम्बोल्ट करंट, दिस वाज द हम्बोल्ट करंट, ओके, ये हम्बोल्ट करंट था। एंड लैब्राडोर हमने अभी ऊपर यहाँ देख लिया, ओके, लैब्राडोर सी से नीचे आने वाला लैब्राडोर करंट जो है वो वहां पे था, ओके। ये लैब्राडोर करंट एंड गल्फ स्ट्रीम जहां मिलते हैं इन दिस रीजन, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन नाउ, ये वाला पार्ट, हाँ, ये लैब्राडोर करंट एंड गल्फ स्ट्रीम जहां मिलते हैं इन दिस पार्ट। तो यहाँ पे एक बहुत फेमस न्यू फाउंडलैंड के पास, वहां पे ना दोनों करंट्स के मिलने की वजह से बहुत रिच फिशिंग ग्राउंड हो जाता है। ग्रैंड बैंक्स बुलाते हैं हम उस फिशिंग ग्राउंड को, सॉरी। सो दैट फिशिंग ग्राउंड इज फॉर्म्ड ओवर देयर बिकॉज वो कोल्ड करंट्स का अपवेलिंग, कोल्ड करंट्स की वजह से यूजुअली न्यूट्रिएंट्स आ जाती है, न्यूट्रिएंट्स के पीछे पीछे प्लैंकटन आ जाते हैं, मतलब प्लैंकटन ग्रो वेरी वेल, वो बहुत अच्छे से थ्राइव कर जाते हैं वहां पे। एंड प्लैंकटन के पीछे छोटे फिश के पीछे बड़े फिश, दैट इज व्हाई दिस इज आइडियली कंसिडर्ड अ वेरी आइडियल फिशिंग ग्राउंड, ओके, अच्छा माना जाता है ग्रैंड बैंक्स। All right, moving forward, we were looking at question now 131. Okay. A map scale represents the ratio between the distance on the map and the map's total area, the height of nearby mountains, actual distance on the ground, or population of the region shown. Okay. मैप का स्केल जो होता है वो यूजुअली वो रेशियो फ्रैक्शन वाले स्केल में वो रेशियो दिखाता है डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। मतलब वो ऐसा होता है कि मैप पे अगर आपको 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इक्वल से वॉट एवर 100 किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड और समथिंग लाइक दैट, ओके, तो वैसे वैसे डिफाइन करता है डिस्टेंस को। तो वो रेशियो होता है, clearly you have to say 1 centimeter on the map has to be one, whatever kilometers on the ground or whatever miles on the ground, ऐसे बताना पड़ता है। वो आप एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड की बात कर रहे हैं, ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। मैप के टोटल एरिया से या हाइट ऑफ नियर बाय माउंटेन से या पॉपुलेशन ऑफ द रीजन से कोई वास्ता नहीं है उसका, ओके, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट। नेक्स्ट वाला जो होगा दैट इज गोइंग टू बी 133. We are looking at 133. A contour map on a map, the contour line on a map connects points of equal elevation. Closely spaced contour lines indicate a steep slope, and widely spaced contour lines indicate a steep slope. Okay. Now let's consider these three statements. We are saying contour line जो होती है किसी map की, वो पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन दिखाता है। दिस इज ट्रू, हमने अभी अभी देखा था, राइट, वी हैड डिस्कस दिस कि यस कंटूर एलिवेशन जो होता है वो आपको बेसिकली पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन को ही कनेक्ट करवाता है। हमने जो पहले कंटूर लाइंस देखे थे, so they are basically that's an imaginary line which is connecting all those places which have equal elevation, same elevation. Okay. अगर closely spaced contour lines होंगे तो इसका मतलब आपका elevation constantly बदल रहा है, okay, that elevation is constantly changing, which means that obviously the slope is very steep, okay, and अगर widely spaced contour lines होंगे तो slope gentle होता है, steep नहीं होता है, the slope becomes gentle, okay। तो हम ये वाला स्टेटमेंट जो है उसको गलत बोलेंगे, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, we'll only go with statement 1 and 2, okay, we can only go with statement 1 and 2, हमने ऑलरेडी देखा था उसको। Okay, moving on to question 136. We are looking at question 136. Okay, consider the following statements. First question says El Nino refers to the periodic warming of surface waters in Central and Eastern Pacific Ocean. El Nino events can disrupt weather patterns globally, including monsoon rainfall in India. And El Nino refers to the periodic cooling of the Atlantic Ocean. Okay.
एल नीनो का फंडा समझने की कोशिश करते हैं। वी आर लुकिंग एल एल नीनो का स्पेनिश में मतलब होता है द बॉय, लिटिल बॉय। ओके, लिटिल बॉय को नीनो बुलाते हैं, लिटिल गर्ल को नीना बुलाते हैं। तो वी आर सेइंग कि एल नीनो जो होते हैं उसका मतलब होता है लिटिल बॉय। नाउ ये फेनोमेनन जो है उसको लिटिल बॉय इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट दिसंबर के अराउंड होता है, क्रिसमस के अराउंड। सो इसके लिए वो उसको एल नीनो, लिटिल बॉय वगैरह वैसे वैसे नाम से बुला रहे हैं। सो द थिंग इज कि वी आर सेइंग एल नीनो का जो फेनोमेनन है वो कुछ ऐसा है। नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज, ये रहा साउथ अमेरिकन कोस्ट, राइट? तो यहाँ से नॉर्मली एक कोल्ड हम्बोल्ट करंट या पेरुवियन करंट फ्लो करता है। ओके, नाउ दिस इज अ कोल्ड करंट। पेरुवियन करंट और हम्बोल्ट करंट इज आइडियली अ कोल्ड करंट। ओके, एवरी 3 to 7 years ये करंट जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है विद वार्म वाटर्स। ओके, तो यहाँ पर जो नॉर्मली ड्राई साउथ अमेरिकन कोस्ट है, ये वाला वेस्टर्न कोस्ट है, वो अचानक वहाँ पे प्रेसिपिटेशन आने लगता है, बारिश वगैरह होने लगती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ की मरीन लाइफ तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो बात अलग है। लेकिन ये इजीली हो जाता है कि वो वार्म वाटर्स आ जाते हैं, इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय वार्म वाटर्स। ओके, और ये जो रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल्ड हम्बोल्ट और पेरुवियन करंट बाय वार्म वाटर्स एवरी 3 to 7 years का फेनोमेनन हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं एल नीनो। ओके, दैट इज व्हाट वी कॉल एल नीनो। अब ये एल नीनो जो होता है ये ऑब्वियसली इसी रीजन को अफेक्ट कर रहा है, पैसिफिक ओशन का जो सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट है उसको अफेक्ट करता है। ओके, तो अगर मैडम, या मैडम, मैडम नमस्ते, मैं अनन्या का पापा बोल रहा हूँ। किसके पापा बोल रहे हैं आप? अनन्या के? हाँ जी, बोलिए ना हाँ सर। जी। मैडम, मॉर्निंग से कितना क्लास चले, आज चले नहीं क्या? क्या हम थोड़ा सा पूछना था। सर मुझे पता, अनन्या कौन से स्टैंडर्ड में है सर? वो तो आफ्टर 12th है ना, क्रैश क्रैश के लिए ऑनलाइन वाला। अच्छा, वो 12 प्लस के लिए है। सर आई एम नॉट अवेयर कि कितने नहीं, क्लासेस। वो बोल रही 3 बजे तक मैं चेक किए, वो चला नहीं बोलती है। इस पहले 3 बजे सर मैंने लेक्चर लेना शुरू कर दिया था। जब से पहले चाल ली। ये सब मेरा भी नहीं चला थी। अच्छा, हाँ आप मैम। 3 बजे से पहले कोई मिला नहीं क्लास? हाँ, नहीं वही पूछना था कि आज चले कि नहीं थोड़ा सा। सर मुझे आइडियली पता नहीं है क्योंकि हाँ, मेरा कोई बात नहीं, टाइम कोई मेरा टाइम कोई बात। सिर्फ 2 to 5 हाँ, होता है। अभी अभी कितना बजे शुरू है मैडम आपका? अभी मैं ज्योग्राफी का गैट के क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर रही हूँ सर। हाँ वही, कितना बजे से शुरू है मैडम ये? 3 बजे से सर। आई स्टार्टेड टेकिंग द लेक्चर एट 3 o'clock, आई कंटिन्यू अंटिल 5 o'clock। ओके, कोई बात नहीं मैडम, थैंक यू टू मैडम। पेपर्स जी सर, नो प्रॉब्लम सर। ज्वाइन ज्वाइन। Was there something you wanted to say, Samruddhi? Yes, ma'am. I have to check, but no classes actually. No class. You had no classes today. Don't you actually ideally give any exams or appear for GAT papers or something like that on Sundays? Don't you guys do that? Because I know that the No, students ma'am. in the regular class do appear for classes. So don't you guys do that on Sunday, or do you have lectures even on Sunday? Yes, ma'am. This is my online lecture. Oh, okay. Once again, check with whoever your liaison is with the class. वो जो भी आपके contact person होंगे, उनके साथ एक बार check कर लीजिएगा। लीना मैम, right for you? तो उनको एक बार पूछ लीजिए कि Yes, क्लास का ma'am. टाइमिंग वगैरह क्या है। Sorry, I should have begun at 2 o'clock, but today I was a little late, so I started at 3. Okay. Here we go Yes, back. ma'am. All right, no problem. So, like we said, we are going back to this part. Okay, we are discussing कि what is happening is that ये El Nino का जो phenomenon है वो Pacific Ocean में हो रहा है in the eastern and the central part. Okay, now we are saying कि जहाँ पर ideally पहले warm होना चाहिए था, वहाँ पे अचानक cold water, जहाँ पे cold waters होने चाहिए थे ideally, वहाँ पे अचानक warm waters आ जाते हैं। तो obviously it affects the rest of the ocean also, है ना? जहाँ पे cold होना चाहिए था वहाँ warm है, जहाँ पे warm होना चाहिए था वहाँ cold हो जाता है। ओके, सो अगर पैसिफिक का ये साइड अफेक्ट हो जाता है तो फिर पैसिफिक का ये साइड भी तो अफेक्ट हो जाएगा। दैट पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन विल आल्सो गेट अफेक्टेड, एंड दैट मींस कि ये पूरा जो सदर्न ऑसिलेशन है आपका वो बदल जाता है। सदर्न ओशंस का जो ऑसिलेशन है वो बदल जाता है, क्योंकि वेयर देयर शुड हैव बीन कोल्ड वाटर,
you clearly get warm waters now, and where there should have been warm waters, you clearly get cold waters now. Okay, तो जहाँ पे लो टेम्परेचर्स होने चाहिए थे वहाँ हाई टेम्परेचर्स हो जाते हैं, जहाँ पे हाई टेम्परेचर्स होने चाहिए थे वहाँ लो टेम्परेचर्स हो जाते हैं. क्लियरली प्रेशर के इक्वेशंस भी बदल जाएंगे. where there should have been high pressure, that region becomes now a low pressure region. जहाँ पे लो प्रेशर रीजन होना चाहिए था वो हाई प्रेशर रीजन हो जाता है. एंड उसकी वजह से ये इंडिया में मॉनसून, ऑस्ट्रेलिया में या चाइना का जो क्लाइमेट है वो भी अफेक्ट हो जाता है. ओके, इवन दैट गेट्स अफेक्टेड. So ideally we believe that a strong El Nino usually brings a weak monsoon in India, because weak monsoon माने clearly यहाँ पे जो high pressure region develop होना चाहिए था, and यहाँ पे because हमारी यहाँ पे low pressure high temperature region develop हो रहा है right summers में, तो वो high pressure region इतना develop नहीं होता है यहाँ पे. So ideally because of that we get a weaker monsoon in India. Okay, हमको इंडिया में थोड़ा weak monsoon मिल जाता है. इंडिया ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट्स एंड चाइना में भरपूर बारिश. दैट इज द जनरल फंडा जब एल नीनो स्ट्रॉन्ग होता है तो. ओके, यूजुअली स्ट्रॉन्ग एल नीनो means कि India Australia will go through droughts or less rainfall, and China will get a large amount of rainfall. China में बड़ा सारा बारिश मिलता है. Okay, so that is essentially an El Nino. That is what the El Nino phenomenon is. El Nino and southern oscillation इसे मिलाकर बोलते हैं उसको. Okay, so we say El Nino refers to the periodic warming of surface waters in the central and eastern Pacific Ocean. That is true. El Nino events can disrupt weather patterns globally, including monsoon rainfall in India. That is also true. And El Nino refers to the periodic cooling of Atlantic Ocean. No, El Nino has nothing to do with the Atlantic Ocean. El Nino का सारा premise or game area is going to be the Pacific Ocean. Okay, वो Pacific Ocean में खेल रहा है. It is not playing in the Atlantic at all. So the option should be 1 and 2. 1 and 2. 1 and 2 should be the option. We are going with option A. Okay. All right. We are done with 136. Now we go to 137. No? What was, अच्छा, no, 137 नहीं. We'll go to 139. यहाँ पर अंडमान निकोबार कुछ दिख रहा है ना? Which Indian archipelago is known for its coral reefs and atolls? Your options are Andaman Nicobar Islands, Run of Kutch, Sundarbans, Lakshadweep Islands. Okay. एक तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कोरल रीफ्स नहीं मिल सकते. सुंदरबंस जो है वो डेल्टा है. ओके, कोरल रीफ्स जो होते हैं वो डेल्टास या मडी वाटर्स, सेडिमेंटेड वाटर्स, उसके यहाँ सर्वाइव नहीं करेंगे. वो कोरल्स जो होंगे उसके अंदर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, सेडिमेंट्स जो होते हैं, वो अटक जाते हैं और कोरल्स ऐसे सफोकेट हो जाते हैं उसकी वजह से. ओके, तो वो ये नहीं करेंगे. कोरल्स विल नॉट डू दैट. ओके, कोरल्स वहां पे ग्रो नहीं करते. मडी वाटर्स में नहीं, वो क्लीन क्लियर ओशैनिक वाटर्स में डेवलप करते हैं. सॉल्टी है ना, वैसे ओशैनिक वाटर्स में डेवलप करते हैं. ओके, समुंदर का पानी लगता है उसको, सॉल्टी समुंदर, लेकिन क्लियर होना चाहिए वो पानी. ओके, तो सुंदरबंस इज नॉट एन ऑप्शन एट ऑल. ऑफ द थ्री, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, रन ऑफ कच्छ एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, आपके हमारे इंडिया में अटोल सिर्फ एक ही जगह पे मिलते हैं. कोरल रीफ्स हमको इंडिया में 4 जगह पे मिलते हैं. अलॉन्ग विद दिस आपको गल्फ ऑफ मन्नर में मिलेंगे. ओके, तो ये जो 4 ऑप्शन है हमारे, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, रन ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ मन्नर. ओके, ऐसी 4 जगह पे हमको कोरल रीफ्स मिलते हैं. लेकिन अटोल्स आर ओनली फाउंड इन वन प्लेस. ओके, अटोल्स विल ओनली बी फाउंड इन लक्षद्वीप. लक्षद्वीप में सिर्फ हमको अटोल्स मिलते हैं, बाकी हर जगह पे हमको फ्रिंजिंग रीफ्स वगैरह मिल जाते हैं. ओके, एरिया वाइज अगर हम इसको देखें, प्लेसेस को देखें, तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द कोरल रीफ्स. इवन दो लक्षद्वीप के अटोल्स आर वेरी फेमस एंड वेरी प्रिटी, बट अंडमान निकोबार आइलैंड्स में मल्टीपल आइलैंड्स है, सम मोर देन 500-550 आइलैंड्स. सो क्लियरली उसके फ्रिंजिंग रीफ्स का जो एरिया होगा, टोटल एरिया, वो ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा होगा. ओके, देन एरिया वाइज सेकंड ऑप्शन पे है आपका, सेकंड पोजीशन पे है लक्षद्वीप. देन थर्ड पोजीशन पे ऑब्वियसली यू हैव रन ऑफ कच्छ, एंड देन लास्टली Gulf of Mannar. Okay, so this is the area wise order of coral reefs in India. Area of coral reefs in India. Is this good? Okay, moving forward with question 140. Which Indian city receives rainfall mainly from the retreating northeast monsoon? Okay, retreating northeast monsoon से we said कि क्या होता है इंडिया में. We are saying winters में what happens is ये लो टेम्परेचर हो गया, राइट. ये जो पूरा रीजन है अब वो लो टेम्परेचर हो गया. लो टेम्परेचर तो हाई प्रेशर रीजन हो गया. ओके, हाई प्रेशर रीजन से विंड्स लो प्रेशर रीजन की तरफ जाएंगे, मतलब इस डायरेक्शन में जाएंगे. ओके, विंड्स आर गोइंग टू गो फ्रॉम दिस डायरेक्शन. अब ये विंड लैंड से निकलते हैं, बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करते हैं. जब बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करते हैं तो क्लियरली थोड़ा मॉइस्चर कलेक्ट कर लेते हैं. ओके, मॉइस्चर कलेक्ट करके वो इस कोस्ट पे बारिश देते हैं. नॉर्थ ईस्ट मॉनसून्स में हमारा ये जो कोरोमंडल कोस्ट है एंड थोड़ा सा केरला वगैरह, यहाँ पे आपको थोड़ी बारिश मिल जाती है. ओके, सो वी आर सेइंग दैट दिस रीजन यूजुअली गेट्स अ लिटिल बिट ऑफ रेनफॉल. ओके, अब यहाँ पर आपके मल्टीपल सिटीज, यहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट पे जो सिटीज होंगे उनको ये विंटर का रेनफॉल डेफिनेटली मिलता है.
रिमेम्बर ये वाला जो कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट है, उसको साउथ वेस्ट मानसून्स में रेनफॉल नहीं मिलता है. द रीजन व्हाई इट डज नॉट गेट एनी रेनफॉल ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून्स इज क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेस्टर्न घाट्स के रेन शैडो रीजन में आ जाता है. हाँ, तो अरेबियन सी वाला बारिश उसको नहीं मिलेगा. और बे ऑफ बंगाल से जाने वाला जो बारिश है वो उसको पैरेलली निकल के ऊपर चला जाता है सीधा मेघालय की तरफ. ओके, सो इट विल नॉट गेट दैट रेनफॉल ऑल्सो. So this region, the Coromandel Coast, can only get rainfall during the winters. Winters जब होंगे तब जाके उसको रेनफॉल मिलता है, एंड दैट रेनफॉल इज यूजुअली सफिशिएंट इनफ. ओके, तो वो नॉर्थ ईस्ट, ये हमारे इंडिया का बहुत स्पेशलिटी है कि साउथ ईस्ट कोस्ट को हमको यूजुअली विंटर रेनफॉल मिलता है. तो साउथ ईस्ट कोस्ट पे अब हमारा क्या लाई करता है, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली या चेन्नई. वी आर गोइंग विद चेन्नई. चेन्नई को मिलती है वो बारिश. ओके, मुंबई, अहमदाबाद एंड दिल्ली फेमसली गेट देयर रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून्स. ओके, all right, which brings us to question 148. Okay. Coral reefs are formed by colonies of tiny marine organisms called coral polyps, and coral reefs are highly sensitive to changes in sea temperature and can suffer bleaching. Coral reefs are typically found in cold polar waters. Okay, let us see. Coral reefs के लिए फॉर्मेशन का सबसे पहला कंडीशन, कोरल रीफ्स क्या होते हैं, पॉलिप्स जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ओके, टाइनी मरीन ऑर्गेनिजम्स, ये सही है. वो कॉलोनीज में रहते हैं, आइसोलेटेड नहीं, यूजुअली कॉलोनीज में रह जाते हैं. उन ऑर्गेनिजम्स की स्पेशलिटी ये होती है कि वो अपनी बॉडीज के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट कर सकते हैं, मीनिंग स्केलेटन्स बना सकते हैं, वो प्रॉपर स्केलेटन्स बना सकते हैं. सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर प्रोटेक्टेड इनसाइड देयर स्केलेटन्स. ओके, दिस इज व्हाट कोरल्स आर बेसिकली, कोरल पॉलिप्स आर. जब उसका पूरा एक कॉलोनी आपको मिल जाता है तो हम उसको कोरल रीफ्स बुलाते हैं. ओके, नाउ द थिंग इज कि ये जो कोरल रीफ्स होते हैं वो एक एल्गी को यूज करते हैं, जूजैंथल नाम के एक एल्गी को यूज करते हैं फॉर द कलर एंड न्यूट्रिशन. ओके, उनके जो खूबसूरत विविड वाइब्रेंट कलर्स होते हैं कोरल रीफ्स के, वो उस एल्गी से आते हैं. इट इज द एल्गी दैट गिव्स देम दिस कलर. ओके, एंड इट इज द एल्गी दैट मेक्स द थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर्स फूड, एंड उस पे वो कोरल पॉलिप्स जीते हैं. ओके, दैट इज वेयर द कोरल पॉलिप्स डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम. ऑलराइट, सो वो जूजैंथल का जो एल्गी है, जूजैंथल नाम का जो एल्गी है, दैट्स इंपॉर्टेंट. ओके, तो ये जो कोरल रीफ्स है उनके लिए क्लियरली अभी पानी में वो बहुत ज्यादा डीप नहीं रह सकते, क्योंकि दे वांट सनलाइट. कोरल पॉलिप्स को खुद को भी सनलाइट चाहिए, एंड वो जो एल्गी फूड बना रहा है उनके लिए, उसको भी सनलाइट चाहिए. ओके, तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा डीप नहीं हो सकते, इसे 100 फीट to 200 फीट तक का मैक्सिमम डिस्टेंस पे वो मैनेज कर लेंगे. ओके, उससे ज्यादा डीप तो नहीं होने चाहिए वो कोरल्स. दूसरी चीज, उनको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर अगर हो जाता है तो व्हाट हैपेंस इज, वो कोरल्स जो होते हैं वो इरिटेट हो जाते हैं. ओके, द कोरल्स गेट इरिटेटेड बिकॉज ऑफ दैट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर. एंड हाई टेम्परेचर में वो क्या कर देते हैं कि वो इमिडिएटली, नॉर्मली उनका टेम्परेचर एनीवेयर बिटवीन 20 to 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल जाता है उनको. ओके, लेकिन उसके ऊपर अगर टेम्परेचर, सी का टेम्परेचर बढ़ने लगा तो फिर देन द कोरल्स गेट इरिटेटेड. ओके, एंड इरिटेट हो जाते हैं तो फर्स्ट थिंग दैट दे डू इज किक आउट द जूजैंथल. That zooxanthil which was giving them the color and nutrition both. Okay, एक बार वो zooxanthil को बाहर निकाल लिया तो वो ब्लीचिंग सफर करते हैं. ब्लीचिंग सफर करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, उनका कलर चली जाना बहुत बड़ी एनवायरमेंटल कंसर्न की बात नहीं है, लेकिन अब वो कलर के साथ साथ उनका खाना भी चला जाता है. इसका मतलब अभी अब वो बेचारे पॉलिप्स मरेंगे, दे आर डाइंग, दे आर इन द प्रोसेस ऑफ डाइंग, तो उनको बचाना पड़ता है उसके बाद. ओके, वंस द कोरल start bleaching, तो फिर there has to be a proper process for saving them and making things good for them. ऐसे वो एक separate measure लेना पड़ता है हमको. Okay, and coral reefs are typically found in cold polar waters. No, deep sea corals अलग चीज होता है, वो उसका survival conditions and everything वो भी सब अलग होते हैं. यूजुअली हम जो कोरल्स नॉर्मली देखते हैं, ट्रॉपिकल कोरल्स जिनको हम बुलाते हैं, वो ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलते हैं, यूजुअली बिटवीन 30 डिग्रीज 30 to 35 डिग्रीज लैटिट्यूड के बीच में, 32 डिग्रीज लैटिट्यूड के बीच में मिल जाता है हमको. उसके ज्यादा ऊपर हम जाते नहीं है कोरल्स के लिए. ओनली बिटवीन इक्वेटर टू ट्रॉपिक्स में यूजुअली मिल जाएंगे हमको ये कोरल्स. ओके, वी आर जस्ट लुकिंग फॉर दैट प्लेस. एंड टेम्परेचर्स भी थोड़े से नॉर्मल होने चाहिए, नॉर्मल ओशन वाटर का जो टेम्परेचर होता है. सेडिमेंटेड वाटर के पास कोरल्स नहीं रह सकते, उनको क्लीन क्लियर मरीन पानी चाहिए, सॉल्टी है ना, ऐसा दैट काइंड ऑफ वाटर यू रिक्वायर. ओके, वी आर लुकिंग आउट दैट वाटर. All right, so we are going with options 1 and 2 only. हम सिर्फ 1 and 2 options के साथ जाएंगे. Okay. And now question 150, the last question of this particular paper. Which of the following best explains the formation of fold mountains like Himalayas? So volcanic eruptions, deposition of river sediments, wind erosion over millions of years, and collision and folding of tectonic plates. Well, here's the thing.
वी आर सेइंग कि हिमालयस जो बने हैं उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग फंडा है। यू से यहाँ पर यूरेशियन प्लेट थी, यहाँ पर इंडियन प्लेट थी, एंड इंडियन प्लेट जो है, यूरेशियन प्लेट इस तरफ मूव कर रही है, इंडियन प्लेट ऐसे मूव कर रही है, इंडियन प्लेट इज बीइंग सबडक्टेड अंडर द यूरेशियन प्लेट। ओके, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, जिसकी वजह से बेसिकली हिमालयस बने हैं। तो बिकॉज देर इज द कोलिजन ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, एंड उस कोलिजन की वजह से ये जो प्लेट्स है या क्रस्ट है उसका फोल्डिंग हो गया है, उसकी वजह से हिमालयस बने हैं। ओके, अगर आपको डेपोजिशन ऑफ रिवर सेडिमेंट्स से कुछ चाहिए तो इंडियन ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया वो रिवर सेडिमेंट से बने हैं। हाँ, अगर वोल्केनिक इरप्शंस से अगर कुछ चाहिए तो डेक्कन प्लेटो बना है आपने यहाँ पे, दैट हैज बीन फॉर्म थ्रू फ्लड, इट्स अ फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंस। बहुत फ्लूइड लावा निकला था 66 मिलियन ईयर्स अगो, पहले का प्रोसेस है, तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। एंड विंड इरोजन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स से हमारे पास एक लैंडफॉर्म है अरावलीज, जिसका हाइट बहुत ऐसे, इट्स काइंड ऑफ बिकम अ रेसिडुअल माउंटेन नाउ। तो वो एक चीज मिल जाएगी आपको, दैट इज विंड इरोजन ओवर मिलियन ऑफ इयर्स का एविडेंस, अरावलीज। ओके, तो दीज आर द वेरियस फीचर्स, लेकिन हिमालयस इज फॉर कोलिजन एंड फोल्डिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। वी आर गोइंग विद दैट। इज दिस ओके पीपल? All right. Let's take a 2 minute break and then we'll discuss the next paper. हम ये वाला पेपर डिस्कस करेंगे. Okay? Give me a 2 minute break. I'll be back in 2 minutes. All right. Here we are. We begin with the geography section. This was last weekend, last Saturday या Sunday को 11th स्टैंडर्ड ने जो गैट का पेपर दिया था उसका डिस्कशन है। ओके, 19 जुलाई का पेपर था ये, सो वो डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। हियर वी आर, क्वेश्चन 112, which of the following landmass is part of the peninsular plateau? Okay, your options are Gondwana land, Tethys, Pangaea, Angara land. Okay, अब ये हमारा वो गोंडवाना लैंड एंड अंगारा लैंड जो है, दैट इज लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड इज सपोज टू बी Laurasia, and Gondwana land is the southern part of that broken Pangea. Remember what we had thought, that there was a whole Pangea. Okay, there was a whole Pangea, and then उसके बाद बाहर का जो था उसको पेंथाल्सा बुलाया. Okay, then ये Pangea टूट गया. Okay, ऊपर वाला part became Laurasia and the lower part became Gondwana land. Okay, and उसके बीच में जो sea था, the sea between them was called as the Sea of Tethys. Okay, that was the essential theory. Now we say कि हमारे लैंडमास में पेनिनसुलर प्लेटो जो है वो टिपिकली कौन से लैंड का पार्ट कैरी करता है, तो वी आर ऑप्शन इज गोइंग टू बी गोंडवाना लैंड। वो गोंडवाना लैंड का पार्ट कैरी करता है। ओके, वो टिपिकल फीचर्स है गोंडवाना लैंड के, मल्टीपल मिनरल्स, ओल्डर रॉक्स एंड स्टेबल लैंड मास एंड एवरीथिंग, वो सारी फीचर्स है आपको पेनिनसुलर प्लेटो में मिलते हैं। सो इट बेसिकली कैरीज दैट पर्टिकुलर पार्ट। ओके, यू गेट दैट थिंग। टेथिस, सी ऑफ टेथिस से हम मानते हैं, वी बिलीव दैट द शिवालिक्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम देयर। We believe that the Sea of Tethys के जो भी deposits है या sediments है, वहां से शिवालिक्स बने हैं। Okay, we believe that शिवालिक्स have been formed by the folding of those sediments. So that is Sea of Tethys का फंडा। Pangaea and Angara land, like we discussed, is Laurasia. That is different. Okay, we'll go with A, Gondwana land. Second question: the world's second highest peak is called as Mount Everest, Karakoram, Aravalli, K2. Your options is, your answer is going to be K2. Okay, K2 को Mount Godwin Austen बुलाते हैं या छोगिरी बुलाते हैं. I'll just write it down over here so that you remember this.
Okay, it is famously called as Chogiri or Godwin Austen. Okay, that is the name of the mountain. Now the thing is कि Karakoram is the range. Okay, Mount Everest is the peak and Aravalli is another fold mountain in India जो काफी पुराना है. So Aravalli का तो height के लिए ये भी नहीं कर रहा है. In some किसी जमाने में अरावलीज यूज्ड टू बी रियली रियली टॉल, लेकिन क्लियरली दैट इज नॉट द केस एनीमोर. माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट पीक, वो नेपाल में लाई करता है. काराकोरम रेंज इंडिया पाकिस्तान शेयर करता है. आइडियली इंडिया में होना चाहिए लेकिन वो थोड़ा पाकिस्तान में भी है. एंड K2 जो है वो वहीं पे वो POK रीजन में लाई करता है हमारी. ओके, जस्ट रिमेंबर K2 इज गॉडविन ऑस्टिन और छोगिरी. K2 is supposed to be way more difficult to climb than the Mount Everest. मानते हैं कि K2 को क्लाइम करना ज्यादा डिफिकल्ट समझा जाता है देन माउंट एवरेस्ट, क्योंकि K2 इज वेरी स्टीप एंड आपके पास ऐसे प्रॉपर वॉकिंग पाथ्स नहीं है. जैसे माउंट एवरेस्ट को ट्रैक करने के लिए प्रॉपर वॉकिंग पाथ्स होते हैं, तो वैसे पाथ्स नहीं है. एंड वहाँ का वेदर भी बहुत खराब माना जाता है, स्पेशली विंटर्स में तो बहुत ही खराब माना जाता है कि इट्स एब्सोल्युटली difficult to trek in that region during winters. I think they finally conquered अभी कुछ पिछले 5-6 सालों में फाइनली दे कॉन्कर्ड द पीक इन विंटर्स. अदरवाइज विंटर्स में लोग वहाँ पे यूजुअली ट्रेक्स नहीं करते थे. And it is supposed to be really difficult because there have been a lot of casualties for trekkers who have tried to climb this peak. Okay, so K2 is famously the second highest peak in the world. All right. Next question 114. Okay, we say the newer deposits of floodplains are called Bhangar, Terai, Khadar or Bhabar. Okay, your answer is going to be younger deposits चाहिए ना आपको flood plains की, तो वो होते हैं खदर. Okay, those are called as खदर. Okay, let's consider ये हिमालयास है एंड ये यहाँ पे गंगा है. ओके, रिवर है. ओके, सो दिस इज द पार्ट. अब इसके इन ये जो स्पेस है, दिस स्पेस, हम उसमें ये चारों प्लेन्स जो है वो डिफाइन करेंगे. ओके, तो हिमालय के फुटहिल्स के ठीक नीचे जो प्लेन होता है दैट फेमसली गेट्स कॉल्ड एज द भाबर प्लेन्स. ओके, उसको भाबर प्लेन्स बुलाते हैं. भाबर प्लेन्स जो होते हैं वो थोड़े से रॉकी होते हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं उसमें. रिवर्स जो माउंटेन्स से नीचे आती है वो डायरेक्टली वो भाबर प्लेन में गिर जाती है, बोल्डर्स एंड वाटर एंड डिपॉजिट्स एंड सेडिमेंट्स एंड ऑल. एंड वो वहां पे रिवर्स यूजुअली डिसअपियर हो जाती है. ओके, बीनीथ दोज बोल्डर्स एंड एवरीथिंग द रिवर्स यूजुअली डिसअपियर. नॉर्मली ग्राउंड वाटर थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, तो ट्रीज भी जो वहां पे बनते हैं वो यूजुअली रेयर होते हैं, स्कैंटी ट्रीज मिलते हैं आपको. लेकिन बड़े बड़े ट्रीज होते हैं जिनके रूट्स डीपली जाकर पानी को ढूंढ सकते हैं, ऐसे वाले रूट्स होंगे उसके. ओके, सो दैट इज भाबर प्लेन्स फॉर यू. ओके, उसके नेक्स्ट वाले प्लेन्स जो होते हैं उनको फेमसली तेराई बुलाते हैं. ओके, द नेक्स्ट प्लेन्स आफ्टर दोज, द वंस टू द साउथ ऑफ द भाबर, आर फेमसली कॉल्ड एज तेराई. अब यहाँ पर यूजुअली जो रिवर्स भाबर में गुम हो गए थे दे रीइमर्ज ओवर हियर इन द तेराई प्लेन्स. एंड रीइमर्ज करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉपर चैनल्स के थ्रू वगैरह जाते हैं, वो क्लियरली ऐसे माशी माशी लैंड्स बनाते हैं, बॉग लैंड्स या वेटलैंडिश काइंड का फीचर्स बना देते हैं. तो यहाँ पर आपको ये तेराई बेल्ट मिलता है. ओके, तो बिकॉज ऑफ दैट अबंडेंस ऑफ वाटर इन दिस रीजन क्लियरली एंड माशी लैंड्स, क्लियरली बड़ा सारा वेजिटेशन आ जाता है. ओके, लश वेजिटेशन होता है यहाँ पे बहुत. एंड उस वेजिटेशन के पीछे वाइल्ड हर्बीवोर्स आ जाते हैं एंड हर्बीवोर्स के पीछे कार्निवोर्स आ जाते हैं. तो ये आपका सफारी रीजन है इंडिया का. ओके, कि यहाँ पर आपको मल्टीपल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिलते हैं, क्रीचर्स मिल जाते हैं, जैसे एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड ऑल. तो नेशनल पार्क्स, यू विल फाइंड ऑल दिस इन द तेराई बेल्ट. ओके, दैट इज द तेराई बेल्ट ऑफ इंडिया. देन नेक्स्ट वाला जो प्लेन है वो, ये जो दोनों है बाकी के, ये फ्लड प्लेन्स बुलाएंगे, हम उसको फ्लड प्लेन्स बुलाते हैं. ओके, फ्लड प्लेन्स माने रिवर जो होता है उसका पानी कभी कभी कंटेन नहीं किया जाता. राइट, मॉनसून्स में जब एक्स्ट्रा पानी हो जाता है तो वो रिवर का पानी चैनल से बाहर आ जाता है. चैनल से बाहर आ जाता है तो वो क्लियरली स्प्रेड हो जाता है आसपास. ओके, और पानी अकेला बाहर नहीं आएगा, उसके जो सस्पेंडेड सेडिमेंट्स वगैरह होंगे उस पानी में, जितना भी डिपॉजिट या अलुवियम होगा वो भी साथ आ जाएगा. एंड वो अलुवियम इस तरफ डिपॉजिट हो जाता है, उसको बुलाएंगे फ्लड प्लेन्स. ओके, दोज आर द फ्लड प्लेन्स. तो ये फ्लड प्लेन्स जो होंगे उसमें नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन कि विच ऑफ दीज आर वी टॉकिंग अबाउट. ओके, तो जो पुराना वाला फ्लड प्लेन होता है जो रिवर से थोड़ा सा दूर होता है उसको कहेंगे भंगर. ओके, दैट फ्लड प्लेन इज कॉल्ड एज भंगर. ओके, विच इज अ लिटिल फादर फ्रॉम द रिवर. ये अगर रिवर है, इफ दिस इज द रिवर, तो वी आर सेइंग कि वो रिवर से जो थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा ऊपर है रिवर के, उसको भंगर प्लेन्स बुलाते हैं. एंड जो रिवर के सबसे करीब है, जो हर साल जब रिवर फ्लड होता है तो रिन्यू हो जाएगा, ऐसे फ्लड प्लेन को बुलाते हैं खदर. ओके, सच अ प्लेन फ्लड प्लेन इज कॉल्ड एज खदर. तो when we are talking of the newer younger deposits of flood plains, तो we are essentially talking of the खदर plains. Okay, हम खदर plains की बात करते हैं.
All right. That answers the question. Question 115 को देखिए. Which of the following peaks is the highest of the Western Ghats? Your options are Dodabetta, Chowdi, Mahendragiri या फिर Anaimudi. Okay. So here आपका आंसर होना चाहिए अनाईमुड़ी. Okay. Western Ghats का फंडा ये है कि Western Ghats जो है वो इसमें क्लियरली नॉर्थ में थोड़े से कम टॉल है, लेकिन जैसे जैसे आप साउथवर्ड जाते जाते हो तो उनका हाइट इंक्रीज होते जाता है. ओके. तो आपको जितने भी एक्स्ट्रा टॉल पीक्स मिलते हैं वो सारे सदर्न इंडिया में मिल जाते हैं. ओके. अनैमुडी जो है वो फेमसली अनैमलई रेंज का पार्ट है एंड इट फॉल्स इन केरला. ओके. केरला में फॉल करता है ये. तो दिस इज दैट माउंटेन. ओके. ये पीक आइडियली सबसे हाईएस्ट पीक होना चाहिए इन द वेस्टर्न घाट्स. उसके सेकंड नंबर पे जो पीक आता है दैट इज गोइंग टू बी डोडा बेटा. ओके. डोडा बेटा जो है वो नीलगिरीज का हाईएस्ट पीक है. तो नीलगिरी रेंज में जो हाईएस्ट पीक मिल जाता है आपको दैट इज गोइंग टू बी डोडा बेटा. तो दिस इज कंसिडर्ड द सेकंड हाईएस्ट पॉइंट इन सदर्न इंडिया. ओके. वेस्टर्न घाट्स में ये लाई करता है. अब ये दोनों डोडा बेटा एंड अनेमुडी जो है वो क्लियरली वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है. वेरएज महेंद्रगिरी एंड जाउडी जो है वो क्लियरली ईस्टर्न घाट्स का पार्ट माना जाता है. ओके. महेंद्रगिरी इज दैट ओडिशा वगैरह वाला रीजन एंड जाउडी हिल्स इज क्लियरली तमिलनाडु में लाई करता है. ओके. Now this they both lie in the eastern Ghats. Chowdi Hills and Mahendragiri both lie in the eastern Ghats. And दोनों जाउडी हिल्स या महेंद्रगिरी की इतनी हाइट नहीं है क्योंकि ईस्टर्न घाट्स बेसिकली बहुत ज्यादा इरोडेड है एंड हाइट में थोड़े से कम है. एक तो थोड़े पुराने भी है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न घाट्स. ईस्टर्न घाट्स काफी पुराने, थोड़े नहीं काफी काफी पुराने हैं. ओके. सो वी आर सेइंग ईस्टर्न घाट्स आर वे ओल्डर देन द वेस्टर्न घाट्स एंड क्लियरली बिकॉज दे आर वे ओल्डर तो वो थोड़े रिड्यूस हो गए हैं ना इरोजन की वजह से, वेदरिंग डेन्यूडेशन की वजह से क्लियरली उनका हाइट रिड्यूस हो गया है. एंड ऊपर से अपने यहाँ पे क्लियरली बड़ी सारी रिवर्स है यहाँ पर. ये वाली रिवर्स है ना. ऑल ऑफ दीज रिवर्स वी आर सेइंग दैट ऑल ऑफ दीज मेजर रिवर्स वेदर इट इज द गोदावरी और द कावेरी और कृष्णा वगैरह ये जो सारी रिवर्स है ये सारी इस तरफ आती है वेस्टर्न घाट से निकलती है एंड सारी ईस्टर्न घाट्स को क्रिस क्रॉस करते हुए इरोड करते हुए फिर आगे डेल्टास बनाती है इन द बे ऑफ बंगाल. ओके. तो उसकी वजह से भी बिकॉज ऑफ दीज लॉन्ग ह्यूज रिवर्स विच हैव बीन इरोडिंग दिस वेस्ट ईस्टर्न घाट्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम क्लियरली ईस्टर्न घाट्स थोड़े से इरोडेड है, थोड़े से ब्रोकन हिल्स टाइप्स दिखते हैं एंड जनरली इतने पुराने होने की वजह से उनका हाइट भी बहुत रिड्यूस हो गया. ओके. तो जितना भी मेजर हाइट मिलता है आपको सदर्न इंडिया में वो वेस्टर्न घाट्स की वजह से मिलता है. दिस नीलगिरीज में जो डोडा बेटा है एंड यहाँ पे अनाईमुड़ी का जो पीक है वो. ओके. वी आर लुकिंग एट दोस. आई होप यू कैन मेक दोस आउट ओवर हियर. कैन यू? Yeah, you can make this out ना. This is Doda Betta over here. This is Anaimudi over here. Okay. And ये यहाँ पर आपके जाउडी हिल्स है. Over here you have the Jaudi Hills and Mahendragiri should be here. Can you see Mahendragiri over here? उसकी तो 1500 ही हाइट है, 1500 meters हाइट है उसकी. ओके. महेंद्रगिरी इज नॉट वेरी टॉल. इनफैक्ट महेंद्रगिरी इज नॉट इवन द टॉलेस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट्स एज वेल. वहां का टॉलेस्ट पीक शुड बी कंसिडर, ईस्टर्न घाट्स का टॉलेस्ट पीक शुड बी कंसिडर जिंदागाड़ा. ओके. जिंदागाड़ा शुड बी द टॉलेस्ट पीक और उसके बाद अरमाकोंडा आना चाहिए. नॉट दिस पेपर, वी आर सीइंग दिस पेपर. ओके. ठीक है. वी आर लुकिंग एट दिस पेपर. ठीक है पीपल. तो वी आर गोइंग विद आंसर डी अनाईमुड़ी. अनाईमुड़ी के साथ जाएंगे. ओके. Look at question 116. Dudhwa National Park is situated in Madhya Pradesh, Kerala, Uttar Pradesh या Rajasthan. Okay, we are looking at Dudhwa. Dudhwa National Park famously Uttar Pradesh में situated है. Okay. The thing with Dudhwa National Park is हमने ना सबसे पहले वहाँ पे एक तो वो बारासिंघा को ये करवाया था. बेसिकली दुधवा इज अ टाइगर रिजर्व. ओके. तो हमने टाइगर्स को वहाँ पे ये करवाया है, ग्रो करवाया है. क्लियरली उनका पॉपुलेशन थोड़ा बड़ा है वहाँ पे. इट्स अ फेमस टाइगर रिजर्व ओवर देयर इन उत्तर प्रदेश. हमने वहाँ का एक और फेमस एनिमल दैट वी शुड नो फ्रॉम दुधवा इज द बारासिंघा, द स्वैम्प डियर. तो उसका पॉपुलेशन काफी ड्विंडल हो रहा था लेकिन वी हैव मैनेज टू ब्रिंग द पॉपुलेशन अप. ओके. And we have also newly introduced the rhino over there, rhinoceros. Okay, so वो रहा आपका दुधवा नेशनल पार्क over there. Okay, मध्य प्रदेश, केरला एंड राजस्थान also have major national parks. लेकिन उसके सारे different ये whenever we cover national parks ना तो we'll do that well. We'll cover all those major national parks in those regions. Okay, let's look at the next question. Question 117. Westerly loose is a hot and dry wind that blows in Punjab, West Bengal, Rajasthan और तमिलनाडु. ओके. लू जो होती है, लू अपने यहाँ पे वो नॉर्थ इंडिया में ब्लो करती है इन पंजाब एंड उत्तर प्रदेश रीजन में.
पंजाब से निकलकर फिर उत्तर प्रदेश रीजन में जाती है, ऑल कभी कभी ऑल द वे बिहार तक जाती है। सो वी आर सेइंग वी आर टॉकिंग ऑफ दोज विंड्स, क्या हॉट एंड ड्राई विंड्स, लू जो होती है। अब ये लू इसलिए फ्लो करती है क्योंकि हमारे यहाँ ना लोकल टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरिएशन हो जाते हैं। जब समर में बहुत इंटेंसिफाई हो जाता है तो ये रीजन बहुत ही लो प्रेशर रीजन हिट कर जाता है। तो क्लियरली वो यहाँ पर इस बेल्ट में फ्रॉम दिस पंजाब टू ऑल द वे उत्तर प्रदेश वगैरह रीजन, यहाँ पर ये लू चलती है। ओके, दिस इज द रीजन वेयर द लू ब्लोज। लू इज अ हॉट ड्राई विंड, डस्टी विंड होता है काइंड ऑफ। आपको उसके लिए गवर्नमेंट का एडवाइजरी मिलता है, क्लाइमेट एडवाइजरी, कि लू में वगैरह ना रहा कीजिए, डिहाइड्रेट ना हो जाइए, क्योंकि पीपल कैन डाई ऑफ दैट एक्सट्रीम हीट एंड डिहाइड्रेशन। सो क्लियरली गवर्नमेंट एडवाइजरीज निकलते हैं कि लू चलने वाली है, या बी केयरफुल ऑफ द एक्सट्रीम हीट और समथिंग लाइक दैट। Ideally, people roam around with those scarves tied around their faces and everything जब लू चलती है तो, because that is too dusty, it becomes too dusty. Okay, so that is the loo for you. So we are saying लू जो है वो पंजाब में चलती है। If you are looking for a some typical thunderstorm kind का थिंग, तो वेस्ट बंगाल में आपको एक ये मिलता है लोकल, ये समर की बात कर रहे हैं ना हम लोग, समर का थंडरस्टॉर्म अगर आप वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं तो देन दैट्स गोइंग टू बी काल बैसाखी। ओके, तो वो एक्सट्रीम हीटिंग हो जाता है, लोकलाइज्ड हीटिंग हो जाता है, जिसकी वजह से वो थंडरस्टॉर्म डेवलप हो जाता है, वैशाख के सीजन में डेवलप हो जाता है, इसलिए उसको काल बैसाखी बुलाते हैं। एंड बहुत बहुत बारिश लाता है, बहुत बहुत बारिश लाता है ये। ओके, दैट इज वेस्ट बंगाल का थिंग, काल बैसाखी। बट इट इज अ थंडरस्टॉर्म ओवर देयर, इट्स अ लोकल थंडरस्टॉर्म काल बैसाखी। whereas लूज जो होते हैं, वो लू जो होती है वो विंड है, हॉट एंड ड्राई विंड है। ओके, ठीक है। लुक एट क्वेश्चन 118, इट इज द सेम थिंग। डैश कॉल्ड लू ब्लो ड्यूरिंग द डे। ओके, वो बहुत मजेदार है, वो दे ब्लो फॉर ऑलमोस्ट 5-6 hours, समटाइम्स वेल इनटू द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, इतनी देर ब्लो करते हैं वो। ओके, तो दोपहर में ब्लो करना शुरू हो जाती है नून के अराउंड, and then it keeps blowing until evening or something. Okay, that is how the loo goes. So we are saying those are hot and dry winds. Loo is essentially a hot and dry wind. It cannot be wet in any form. Loo wet नहीं होता है किसी भी फॉर्म में, या cool भी नहीं होता है किसी भी फॉर्म में। Okay, that is essentially the loo. Look at question 119. Okay, we are talking of Gir Forest. Gir Forest in Gujarat is the home of Asiatic tiger, Asiatic rhinoceros, Asiatic elephant, and Asiatic lion. Okay, तो गिर फॉरेस्ट फेमसली एशियाटिक लायन के लिए फेमस है अपने यहाँ पे। ओके, दैट इज अ वेरी फेमस रीजन फॉर द एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन ना थोड़ा सा अफ्रीकन लायन से छोटा होता है, उसका मेन भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, एंड पेट के ऊपर एक टिपिकल फोल्ड होता है, उसका स्किन का फोल्ड आता है। इट्स वेरी डिस्टिंक्टिव लाइक दैट। एशियाटिक लायंस लुक काफी डिफरेंट फ्रॉम द अफ्रीकन लायंस। ओके, अफ्रीकन लायंस आर बिगर, लार्जर, whereas एशियाटिक लायंस इज स्मॉल, स्लाइटली स्मॉलर, स्लाइटली छोटे होते हैं वो। द थिंग इज, ये जो गुजरात वाला रीजन है ये थोड़ा सा ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट का रीजन है, तो थोड़ा सा ऐसा पैची ड्राई लैंड होता है वहाँ पे। एंड वो जो जिस तरह का वेजिटेशन है वहाँ पे, वो प्रॉपर कैमोफ्लेज होता है फॉर द एशियाटिक लायन। उनकी जो स्किन होती है ना, थोड़ी सी येलोइश ब्राउनिश कलर की, तो उसके लिए बहुत प्रॉपर कैमोफ्लेज होता है उधर का वेजिटेशन। ओके, सो दैट इज ऑल्सो वन फेमस थिंग अबाउट इट। टाइगर्स हमारे यहाँ पे बड़े सारी जगह पे मिलते हैं, जैसे मैंने अभी दुधवा वगैरह डिस्कवर किया एंड ऑल दैट डिस्कस किया, तो वहां पे हमको टाइगर्स मिल जाते हैं। Let's look at where we find rhinoceros, right? Let's take a look at where we are going to find all the rhinoceros in the world in India. असम में मिलता है हमको। ओवर 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज बेसिकली फाउंड इन असम, एंड देन स्मॉलर रिलोकेटेड पॉपुलेशन यू विल फाइंड इन वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश, जैसे हमने दुधवा में डिस्कवर किया था वैसा वाला। सो वी आर लुकिंग एट दोज टू प्लेसेस। ओके, लेकिन मोस्टली तो असम में मिलेंगे। असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहां पे मिल जाते हैं हमको। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलते हैं, थोड़े मानस में मिलेंगे, because that is also an important. That's the rhino capital is going to be the Kaziranga National Park. It has 2/3 of the global Indian rhino population. Whereas Orang या जल्दापारा में clearly आपको थोड़ा सा stable population मिलेगा. Okay, West Bengal में you have the जल्दापारा and गोरुमारा, and उत्तर प्रदेश में you have the दुधवा नेशनल पार्क। ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट हैबिटेट है फॉर द राइनोस, जिनको हमने 1984 से वहां रिलोकेट किया है एंड वहां पे चलवा रहे हैं उसको। दैट्स द इंडियन राइनो जो हमको वहां मिलता है। तो राइनोज हमको इंडिया में बेसिकली 3 स्टेट्स में मिलेंगे,
Assam, West Bengal, and Uttar Pradesh. Okay, that is where we are finding them. Okay, people. Kaziranga being the more important place, that is the rhino capital of India. Indian rhino ka ye interesting animal to look at. Okay, no problem. So we are going to go with this, and Asiatic elephants. Let's get this on the elephants also. We say India is home to 60% of the world's wild Asian elephant population. ठीक है, मोस्टली सदर्न रीजन्स में मिलते हैं हमारे यहाँ पे, मेजर हैबिटेट्स है हमारे यहाँ पे सदर्न रीजन्स में. ओके, नहीं मिल रहा है हमको वेस्टर्न घाट्स में, मिल रहे हैं हमको कर्नाटका, राइट, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, एंड देन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में असम, अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं हमको. ओके, सो दैट इज द प्लेस वेयर यू आर गोइंग टू फाइंड दीस एलिफेंट्स. तो मेजॉरिटी ऑफ एलिफेंट्स हमको वहां मिलेंगे. ऑलराइट. All right, moving forward, we are done with this part now. Now we go to question 120. We are going to question 120. Name the resources that are found everywhere, like the air we breathe. Okay, we are looking for resources जो हर जगह मिलते हैं, like the air we breathe. अभी उसका तो English word ही, the meaning of this, things that are found everywhere are omnipresent or pervasive. ऐसी चीजों को usually ubiquitous बुलाते हैं. Okay, such things are famously called ubiquitous. Okay, तो ubiquitous जो होता है, इसका मतलब होता है कि ये हर जगह मिलता है, जैसे commonly मिल जाता है, localized नहीं होता है, हर जगह मिल जाएगा. Okay, तो when you're talking of ubiquitous resources, you're talking of say air या oxygen वगैरह जो होता है, वो हर जगह मिल जाता है, right? It is not localized. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में मिल रहा है, यूएसए में नहीं मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है. सो या फिर you're talking of sunlight or water or wind, ये जो होता है, these are considered as ubiquitous resources. Okay, इनको ubiquitous resources मानते हैं. तो द थिंग इज यूबिक्विटस रिसोर्सेज का वो बहुत आसानी से मिलते हैं, लेकिन वो तो उन पे हम बहुत ज्यादा पैसा, हम उस पे बहुत ज्यादा कमर्शियल वैल्यू अटैच नहीं करते हैं. तो यूबिक्विटस रिसोर्सेज वी डू नॉट अटैच अ लॉट ऑफ कमर्शियल वैल्यू. ऐसा नहीं है कि हम जाके विंड खरीद रहे हैं ना, ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन खरीद रहे हैं और समथिंग, ऐसा तो नहीं होता है. तो हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन मिलना अलग बात होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, एट दैट टाइम वी कैन पुट अ प्राइस ऑन इट. बट अदरवाइज ये जो ऑक्सीजन हम नॉर्मली ब्रीथ करते हैं या विंड एक्सपीरियंस करते हैं या सनलाइट एक्सपीरियंस करते हैं, देयर इज नो कमर्शियल प्राइस ऑन इट. ओके, so even though it is available easily, it is, and we cannot put a huge commercial price on it, but it is very important for us. अगर वो नहीं होगा तो survival will be very difficult. Okay, so that is essentially what ubiquitous resources are. If you're looking at renewable resources, तो renewable resources वो होते हैं जो जिनका सप्लाई थोड़ा सा इन्फिनिट होता है, एंड आप जितना स्पेंड करोगे उस रिसोर्स को या कंज्यूम करोगे, उससे फास्ट वो रिप्लेनिश हो जाएगा. ओके, इट विल बी रिप्लेनिश्ड वे फास्टर देन हाउ मच यू स्पेंड और यूज इट. ओके, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स आर गोइंग टू बी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, बायोमास, जियोथर्मल एनर्जी, है ना. तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ये रहे हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ओके, एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूजुअली द थिंग विद रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज कि वो हमारा ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री है, राइट. तो वी आर ट्राइंग टू लुक फॉर बेटर टेक्नोलॉजीज एंड स्लीकर टेक्नोलॉजीज टू हार्वेस्ट दीज रिसोर्सेज, टू कि हम उनको यूज कर पाए इसके लिए. ओके, तो ये इंडस्ट्री थोड़ा न्यू है हमारे लिए, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, इवन दो इट हैज बीन देयर फॉर सम टाइम नाउ, बट क्लियरली वो थोड़ा सा, उसको हम काइंड ऑफ सनराइज इंडस्ट्री बोलते हैं हमारा, है ना, ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री. सो वी आर सीइंग कि द होल थिंग इज कि हम उसमें टेक्नोलॉजी बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू डू मोर रिसर्च एंड गेट बेटर टेक्नोलॉजी टू use all this energy for ourselves. Okay, because clearly we are not doing very well with non-renewable energy. तो non-renewable energy is going to be that जिसके सप्लाई फाइनाइट होते हैं, लिमिटेड होता है, एंड उसको यूज जितना आप, जैसे आप कंज्यूम करते हो, उससे उतनी स्पेस से वो क्लियरली खुद को रिप्लेनिश नहीं करता है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कोल या पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जो होते हैं, या फिर न्यूक्लियर फ्यूल्स देख लो, या मिनरल्स, मेटल्स, है ना. वी आर लुकिंग एट इवन ग्राउंड वाटर एक्विफर्स फॉर दैट मैटर. वो सारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हो गए हमारे. ओके, दोज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेस मतलब जैसे वेरी टिपिकली जैसे छोटा नागपुर में आपको कोल या आयन और मिलता है, या समथिंग लाइक, या फिर कर्नाटका में आपको आयन और मिल रहा है, सो ऑन सो फोर्थ. तो दीज आर लोकलाइज्ड रिसोर्सेस. कर्नाटका में गोल्ड मिल रहा है, वंस अगेन, तो यू आर लुकिंग फॉर वेरी स्पेसिफिक रिसोर्सेस. ओके, बहुत लोकलाइज्ड कोई स्पेसिफिक रिसोर्स अगर आपको मिलता है तो उसको लोकलाइज्ड रिसोर्सेस बुलाते हैं. ऑलराइट, ठीक है. तो टू आंसर क्वेश्चन 120, it is going to be ubiquitous. Okay, ubiquitous मतलब जो आपको हर जगह मिल जाता है.
Question 121. Name the type of resources which have the capacity or ability to reproduce or renew quickly. अभी डिस्कस किया, it is going to be renewable resources. जैसे hydroelectricity या solar, wind energy, biomass, geothermal energy. These are going to be renewable resources. Okay, faster replenish हो जाएंगे, much faster than the rate at which we can consume them. Okay, बहुत जल्दी reproduce या renew हो जाते हैं. Sunlight तो रोज ही आएगी, तो solar energy रोज होगी, so on so forth. Okay, so we are looking at that. Let's look at question 122. Okay, we are looking at question 122 now. Question 122 says, key which of these is an example of sustainable development? Okay, आपके पास कौन से examples है sustainable development के? Ignoring the lights when they are switched on but not required, not wasting paper, using coal and petroleum deposits at low pace, and using coal and petroleum deposits at a fast pace. Okay, sustainable development मतलब कि आपको डेवलपमेंट करना है, प्रोग्रेस करना है, लेकिन इस रेट से करना है कि फ्यूचर जनरेशंस को सस्टेन कर सके आप. ओके, यू नो दैट यू आर गोइंग टू हैव फ्यूचर जनरेशंस, यू नो दैट देयर इज गोइंग टू बी लाइफ ऑन अर्थ इवन आफ्टर यू डाई. तो उसको सस्टेन करना चाहिए, उसको फिर भी आपको मेंटेन करना चाहिए, उसको प्रोवाइड करना चाहिए आपने. ओके, इस हिसाब से आपको अपनी डेवलपमेंट यूज करनी है. मीनिंग आपको रिसोर्सेस ऐसे स्पेरिंगली इस्तेमाल करने हैं, सो मच सो कि आप उसको कंप्लीटली यूज अप नहीं करते हो, सो दैट आगे के जनरेशन के लिए वो ना रहे. ऐसा नहीं यूज करना है आपको. यू डोंट वांट टू यूज देम लाइक दैट. ओके, you have to use them in a way so that even the generations further, the generations to come later, even they have to have access to these resources. Okay, they also should be able to have access to these resources. That is exactly what sustainable development is. Okay, तो अभी अगर हमको वैसा करना है sustainable development, तो ignoring the lights when they are switched on बट नॉट रिक्वायर्ड. अगर लाइट की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हमने स्विच ऑन करके रखा है, तो हम क्लियरली एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं. एंड वो जो एनर्जी हम वेस्ट कर रहे हैं वो हमारे पास वापस नहीं आ रही है, तो वी आर वेस्टिंग रिसोर्सेस. तो ये तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हुआ. ओके, नॉट वेस्टिंग पेपर, दैट इज कंसिडर्ड गुड. पेपर को वेस्ट करना सही नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है. अज्यूम करके कि हम सारा पेपर जो है वो सिर्फ ट्रीज से ही बना रहे हैं. ओके, वो रिसाइकल पेपर नहीं है, वो ट्रीज से डायरेक्टली पेपर पल्प जो होता है ट्रीज को ये करके टिम्बर से जो पेपर पल्प बनता है एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो उससे आ रहा है पेपर, ऐसे हम अज्यूम करते हैं. तो दैट इज अ गुड मेजर, बट दैट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नॉट वेस्टिंग पेपर इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके, using coal and petroleum deposits at a low pace, yes, that would be considered an example of धीरे धीरे, बहुत ज्यादा rapidly, you're not burning through them. Okay, you're not running through them, not running to that resource. उसको बुलाएंगे, इसको definitely sustainable development बुला सकते हैं. using coal and petroleum deposits at a low pace. Okay, आराम से यूज करो, ऐसा ना यूज करो कि कल का like there is no tomorrow. ऐसे नहीं यूज करना है किसी भी रिसोर्स को. ओके, दैट इज द आइडिया बिहाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एंड आप जितना फास्ट यूज करोगे, फोर्थ ऑप्शन अगर आप कंसिडर करो, तो आप जितना फास्ट यूज करोगे कोल एंड पेट्रोलियम को, उतना जल्दी से तेजी से उसका सप्लाई खत्म हो जाएगा, विच मीन्स की फ्यूचर जनरेशन को वो मिलेगा नहीं. तो तभी उनको एनर्जी के बड़े सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे. सो यू डोंट वांट दैट टू हैपन. सो दैट वुड बी इज नॉट व्हाट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज. ओके, चलेगा. नेक्स्ट जो होगा वो अपना है, दिस इज नॉट दैट. व्हाट इज दिस? इंडिया पाकिस्तान चाइना? नो, दैट इज आल्सो नॉट अ क्वेश्चन. वो तो पॉलिटी का क्वेश्चन लग रहा है. ये 138 क्या है? हाँ, 138. वी आर लुकिंग एट एसटीपी. एसटीपी क्या होता है, ऐसे उनका कहना है. एसटीपी इज एन एब्रिविएशन ऑफ योर ऑप्शंस आर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सिस्टम टेक पार्क, स्टेट थर्मल प्लांट एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पिकेट. ओके, ये ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, सो वी कैन इजीली गो विद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क. ओके, वी कैन इजीली से दैट दिस इज अ एसटीपी का मतलब होगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क. The whole idea of software technology park is it's a government initiative basically. वो कहते हैं कि जितने भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के जितने भी इंडस्ट्रीज है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट्स के जितने भी इंडस्ट्रीज है, सॉफ्टवेयर सर्विस जो प्रोवाइड करता है वो, तो वो सारे इंडस्ट्रीज को एक साथ यूजुअली गवर्नमेंट डालने की कोशिश करते हैं. ओके, द होल आइडिया बीइंग इज कि वो थोड़ा एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना चाहता है, हमारे जो आईटी एक्सपोर्ट्स है उसको बूस्ट करना चाहता है गवर्नमेंट. सो व्हाट वी डू इज दैट हम ये सारी जगह को एक यूजुअली वो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है कि ये सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, उसको एक्सपोर्ट करवाएंगे, एंड देन उसके बदले ऑब्वियसली हमको फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन करेंसी मिलेगा एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो
गवर्नमेंट यूजुअली बहुत स्टैंडर्डाइज सिंगल विंडो प्रोसेस रखता है, एक ही मिनिस्ट्री के नीचे उसको काम करवाता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. एंड देन इट आल्सो प्रोवाइड्स व्हाट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड इन दीस प्लेसेस, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर देता है. द होल आइडिया बीइंग कि अगर एक वन स्टॉप प्लेस अगर होगी फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एंड फॉर ऑल दोस पीपल टू गैदर टुगेदर एंड एक्सपोर्ट दैट, तो यहाँ के जो एक्सपोर्ट्स होते हैं, इस इंडस्ट्री के जो एक्सपोर्ट्स होते हैं, उसका मॉनेटरी वैल्यू बहुत हाई होता है. एंड क्लियरली फॉरेन कंपनीज होते हैं जिनको हम केटर करते हैं, तो क्लियरली हमको फॉरेन एक्सचेंज भी बड़ा सारा मिलता है, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा. ओके, इट विल बी कंसिडर्ड वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी. चलेगा. सो दैट्स एसेंशियली अ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क. ओके. All right. Consider question 139. How can industrialization, okay, how can industrialization assist in bringing in foreign exchange? Okay, that is the question. ये हमारा question हुआ. Okay. So now we are looking at this. Our options are removing dependence on agriculture by providing alternative employment, export of manufactured goods, modernization of agriculture, import of manufactured goods. Okay, ये सारे चार options हम consider कर रहे हैं. Now, removing dependence on agriculture by providing alternative employment. Okay, उससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज कब आता है पीपल? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड जब फॉरेन एक्सचेंज आता है. फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आती है. इसका मतलब हमको हमारी कोई चीज हमने जो बनाई है, ऐसी कोई चीज बाहर जाके बेचनी पड़ती है. ओके, बाहर के कंट्रीज में वी हैव टू एक्सपोर्ट समथिंग, जिसके बदले में हमको वो फॉरेन मनी देंगे, फॉरेन एक्सचेंज देंगे. ओके, हम उसको अपनी बैंक्स में एक्सचेंज करवा सकते हैं, लेकिन वो फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली आरबीआई के पास जाता है, जिसका खुद का एक रिजर्व होता है फॉरेन एक्सचेंज का. रिमेंबर, हमने इससे पहले इन सम क्वेश्चंस बिफोर वी हैड डिस्कस दिस ऑप्शन ऑफ हमारा मॉनेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, एंड वी हैड डिस्कस्ड वी हैव अ मिनिमम रिजर्व सिस्टम, है ना. हमारे कंट्री का, आरबीआई का, सेंट्रल बैंक का एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, जिसमें हम कहते हैं कि 200 करोड़ तो हमारे पास होनी चाहिए. ओके, वो 200 करोड़ में से 115 करोड़ जो है, 115 करोड़ जो है, वो आइडियली गोल्ड में होनी चाहिए या बुलियन में होनी चाहिए, एंड बाकी के 85 करोड़ जो है वो फॉरेन करेंसीज में होनी चाहिए. ओके, नाउ वो हमारा मिनिमम रिजर्व था. दैट वाज अ मिनिमम रिजर्व. क्लियरली करंटली हमारे पास बहुत पैसा है, टचवुड. I think we are somewhere in billions, some $1 billion, $600 billion or something. That is the amount of foreign exchange reserves that we hold. Okay, so that is not a question at all. The funda is कि we are trying to look at all those activities that will bring in foreign exchange. अगर हम एग्रीकल्चर के लिए ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं एंड उसका डिपेंडेंस रिड्यूस कर देते हैं, तो इसका मतलब व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर increasing the number of people who will be employed in the secondary or the tertiary sector more than the people who are employed in the primary sector, which is a good thing, which is ideally a good thing. People should move from the primary sector to the secondary or tertiary sector, because that will be better development, better use of the human resources, and far better contribution to the GDP. जीडीपी को बेटर कंट्रीब्यूशन होगा क्योंकि ज्यादा पैसा बनता है क्लियरली सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर में. ओके, एंड सो वो ऑप्शन से हमारा लोकल इकोनॉमी जो है वो बेटर हो जाता है, फॉरेन एक्सचेंज नहीं आता है. एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है वो डेफिनेटली हमारा फॉरेन एक्सचेंज लाता है. ओके, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो होते हैं वो क्लियरली इट ब्रिंग्स यू मोर फॉरेन एक्सचेंज. एक तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइवर्सिफिकेशन भी कराता है आपके इसका कि you are not depending on other occupations like primary occupations or something. You're clearly into secondary occupations and now you're producing also. आप थोड़ा सा better produce कर रहे हो ताकि आपको foreign exchange मिल जाए. That is a good thing. Okay, वो अच्छा माना जाता है. And आप जितना ज्यादा how do you say, usually आपका फायदा ज्यादा होता है when you are rather rather than manufacturing रॉ मटेरियल्स में आप जितना पैसा, प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आप रॉ मटेरियल्स में जितना पैसा बनाते हो प्राइमरी सेक्टर में, उससे कई ज्यादा पैसा आप उसको वैल्यू एडिशन करके बना सकते हो. सी फॉर एग्जांपल इफ आई ड्रॉ if we are export of manufactured goods, right? So for example we are looking at maybe फिशिंग को देख लेते हैं. ओके, तो अगर हम फिश करें एंड वही उसको प्राइमरी सेक्टर में उसको वहीं पे बेचना शुरू कर दे, इफ वी स्टार्ट सेलिंग आउट द फिश राइट ओवर देयर, तो क्लियरली इट डजंट गेट यू इनफ मनी. ओके, now you take that fish, you can it, you process it, pickle it, whatever you want to do with it, and then send it outside the country. That is an export of manufactured goods. That is value addition to the good. Okay, and that fetches you more money. उससे थोड़ा सा ज्यादा पैसा आता है आपको. Okay, तो वो चीज एक आपको करनी चाहिए. मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर विल प्रोबेबली इंक्रीज योर यील्ड एज वेल एज आउटपुट. दोनों इंक्रीज करेगा आपका.
एग्रीकल्चर को आप जितना मॉडर्नाइज करोगे आपका यील्ड भी बढ़ेगा मे बी, एंड आपका आउटपुट भी बढ़ेगा, which means there will be more for people to eat. We have a large country. It is necessary that we have a large output of agricultural grains. So that is good that way, but that does not bring you foreign currency unless you're trying to export that एग्रीकल्चरल ग्रेन. ओके, एंड इम्पोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से तो सारा ट्रेड सरप्लस ही, ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा हमको. आप जितना इम्पोर्ट करते हो उतना आपका ट्रेड डेफिसिट होता है. ट्रेड का ना एक बैलेंस होता है जिसमें आप इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट से बैलेंस कर देते हो उसको. ओके, तो आइडियली अगर आप जितना इम्पोर्ट करते हो उतना ही एक्सपोर्ट करोगे. इम्पोर्ट माने आप बाय कर रहे हो चीजें बाहर से, एक्सपोर्ट माने आप चीजों को सेल कर रहे हो बाहर जाके. ओके, बाहर की कंट्रीज में सेल कर रहे हो. सो अगर अगर आपका इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का वैल्यू सेम हुआ तो फिर आपका ट्रेड एकदम बैलेंस्ड है. ओके, देन दिस इज अ बैलेंस्ड ट्रेड. आइडियली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, आइडियली व्हाट एनी कंट्री शुड बी लुकिंग फॉर, कि उनके एक्सपोर्ट्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होनी चाहिए. मतलब वो जो चीजें बाहर बेच रहे हैं वो इंक्रीज होनी चाहिए, और वो जितनी चीजें खरीदते हैं बाहर से वो थोड़ी कम होनी चाहिए. इम्पोर्ट्स की वैल्यू कम होनी चाहिए, एक्सपोर्ट्स की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए. उसको बुलाते हैं ट्रेड सरप्लस. ओके, दैट विल आइडियली बी कॉल्ड एज अ ट्रेड सरप्लस. लेकिन आप जितना इंपोर्ट करोगे चीजों को, अगर आपके इंपोर्ट के वैल्यूज इंक्रीज हो गए तो फिर उसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, एंड दैट इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड आइडिया एट ऑल फॉर एन इकोनॉमी, फॉर एनी इकोनॉमी, नॉट जस्ट आवर इकोनॉमी. किसी भी इकोनॉमी में ट्रेड डेफिसिट ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते. ओके, दैट इज नॉट कंसिडर्ड ग्रेट. ऑलराइट, लेट्स गो टू क्वेश्चन 140 then. Which of the following is the effect of liberalize, एक सेकेंड ना, we are talking of question 140. Okay. Which of the following is the effect of liberalization and foreign direct investment on the iron and steel industry of India? Your options are boost to the industry, agricultural development, high costs and limited availability of coking coal, and irregular supply of energy. Okay, ठीक है. These are your options. Okay. तो अभी आप सबसे एक तो आई होप यू नो कि 1991 में हमने एलपीजी किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब कर लिया था. ओके, तो बिकॉज हमारे रिजर्व्स बहुत कम हो गए थे एंड वी नीडेड, हम तब तक थोड़ा सा विद इन सेल्फ सस्टेनिंग पॉलिसी में जी रहे थे. उसके बाद हमें रियलाइज किया नहीं, वी शुड ओपन अप अ मार्केट्स टू ग्लोबल ट्रेड, एंड दैट रियली चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अस. ओके, सो नाउ वी आर ट्राइंग टू लुक एट दिस पार्ट कि इसमें से कौन सा इफेक्ट है जो लिबरलाइजेशन ने एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ने अचीव कर लिया. लिबरलाइजेशन का पहला मतलब होता है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा गवर्नमेंट लाइसेंसिंग एंड गवर्नमेंट कंट्रोल में इंडस्ट्रीज नहीं रहते. ओके, दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड लिबरलाइजेशन. इसका मतलब अभी सिर्फ, पहले कैसा होता था ना अपने यहाँ पे, अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया वुड बी कंट्रोल्ड इन अंडर द पब्लिक सेक्टर. ओके, पब्लिक सेक्टर में मतलब गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज हुआ करते थे. तो ये वाले ने क्या कर दिया, हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को खुला कर दिया कि ना, प्राइवेट प्राइवेट पहले भी खुला था, लेकिन नाउ वी आर सेइंग कि इवन प्राइवेट पीपल, प्राइवेट इंडिविजुअल्स कुड इन्वेस्ट इन द इंडस्ट्री एंड स्टार्ट अप देयर ओन इंडस्ट्री. ओके, so that is what liberalization essentially means, that it does not have to always be in the public sector. उस पर वो government red tapes, government licensing, उसका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं बचता है. ओके, you still have to go through the normal procedures and protocols, but it is not very, how do you say, it is not very tedious, बहुत ज्यादा tedious नहीं हो जाता है प्रोसेस. ओके, एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माने जो बाहर के देश है, वहां के जो फॉरेन कंपनीज है या फॉरेन इंडिविजुअल्स है, वो हमारे देश में आके हमारी इंडस्ट्रीज में डायरेक्टली पैसा लगा सकते हैं, डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं. ओके, दैट इज व्हाट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स. तो इसका इफेक्ट हमारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे ये हुआ कि हमारी इंडस्ट्री को बूस्ट मिली. Yeah, okay, it got a huge boost. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने, बिकॉज वी अलाउड दिस टू हैपन, तो हमको मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिली. बाहर के लोगों ने पैसा लगाया. ओके, लेट्स से कि बाहर के लोगों ने पैसा लगाया, तो क्लियरली हमको मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी मिली, एंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हमारे यहाँ के बाहर के, दे ऑल कुड फ्रीली एंटर दिस सेक्टर. ओके, सब कुछ, सब एवरीथिंग वेंट वेल, एंड क्लियरली एज लॉन्ग एज मनी एंड टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट, देन यू कैन एक्सपेक्ट बेटर प्रोडक्शन प्रोसेसेस, बेटर प्रोडक्शन क्वालिटी, इवन बेटर लेबर रिफॉर्म्स आ गए. उसके बाद वो थोड़ा सा इंडस्ट्री थोड़ा सा प्रॉपरली सॉर्ट हो गया, प्रॉपरली कंपार्टमेंटलाइज हो गया, तो वो सारी चीजें अच्छी होने लगी, हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया थोड़ा सा, एंड उसने हमारे एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ा दिया. तो क्लियरली आवर इंडस्ट्री वाज वेल बूस्टेड. ओके, स्टील इंडस्ट्री का एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से वास्ता ये हो सकता है कि जितना स्टील इंडस्ट्री बेटर करेगी उतना एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट वगैरह थोड़ा सा बेटर बनेगा, तो उसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो सकता है. दैट इज वन वे इन विच दिस कैन बी रिलेटेड. हाई कॉस्ट जो होते हैं ऑफ हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल, ये इंडिया का इनहेरेंट प्रॉब्लम है. हमारे पास कोकिंग कोल कम ही है. वी हैव इनफैक्ट
हमारे पास ओरिजिनली भी अभी हमारे पास कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, कुछ नहीं होते, राइट? तो उसमें हमारे पास कोकिंग कोल थोड़ा कम ही हुआ करता था, पहले से ही थोड़ा कम है। तो दिस हैज नथिंग टू डू विद लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इट इज एन इनहेरेंट प्रॉब्लम विद इंडिया। हाई कॉस्ट एंड limited availability of coking coal se, but in fact after this thing happened, after liberalization and foreign direct investment happened, to make the production very competitive, हमने बाहर से जो द पीपल हु आर इन्वेस्टिंग फ्रॉम आउटसाइड, उन्होंने बाहर से कोकिंग कोल बेटर प्राइसेस पे, competitive प्राइसेस पे इंडिया में लाना शुरू कर दिया, so that they could develop the industry over here. So that clearly went well for us, that was not a problem for us, okay? And irregular supply of energy, irregular supply of energy वगैरह भी ऐसा कुछ नहीं था अपने यहाँ पे, क्योंकि we made energy the way we wanted and the way we kept it, so वो तो that cannot be a problem. क्योंकि क्लियरली हमको जितना ज्यादा, सी पीपल, व्हाट हैपेंस इज ना, द मोर यू put your capital to good use, the better and far more streamlined your processes become, okay? As long as you have good leadership. मतलब वो अभी कंपनी के मैनेजमेंट का भी पार्ट है, लेकिन जब तक आपको पैसा अवेलेबल होता है, तब तक मोस्ट ऑप्शंस, कैपिटल अवेलेबल जब तक है इंडस्ट्री में, तब तक मोस्ट ऑप्शंस काफी प्रोसेसेस काफी स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं एंड चीजें ज्यादा आसान एंड कन्वीनियंट हो जाएंगी। तो ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं आएंगे, ओके? वील जस्ट गो विद दैट ऑप्शन। Let's go with question 141. 60% of sugar mills are concentrated in which of the two states? West Bengal, Odisha, Arunachal Pradesh and Gujarat, Punjab and Haryana, Uttar Pradesh and Bihar. Bihar, this must be an old statistic people. आज के लिए अगर आपको कंसिडर करना है तो बिहार नहीं चलेगा, आज के लिए आपको महाराष्ट्र करना चाहिए, ओके? महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश में आपके बड़े सारे शुगर मिल्स कॉन्सेंट्रेटेड है। पुराने जमाने में बिहार में हुआ करते थे, बट बिहार का प्रॉब्लम ये भी था कि बाद में ना वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डिड नॉट कीप अप विद द टेक्नोलॉजी एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डिड नॉट कीप अप विद द प्रोडक्शन ऑफ द शुगर, तो क्लियरली वहां से छूट गया। महाराष्ट्र गॉट एन इन वे बिकॉज वन, फर्स्ट ऑफ ऑल महाराष्ट्र में सेम एज उत्तर प्रदेश कैनल्स का नेटवर्क अच्छा है, पानी इरिगेशन अवेलेबल है, शुगर के लिए पानी चाहिए, हवा चाहिए एंड मतलब मिट्टी चाहिए एंड क्लाइमेट चाहिए, राइट? तो क्लाइमेट एंड दिस वाज गुड, इन वाटर वाज गुड एंड इवन यू हैव गुड अमाउंट ऑफ सॉइल्स, राइट? सॉइल्स भी अच्छे हैं अपने यहाँ पे। वेयर उत्तर प्रदेश का फंडा ये है कि सॉरी महाराष्ट्र में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वी हैव अ वेरी गुड नेटवर्क ऑफ कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, है ना? कोऑपरेटिव सेक्टर का बहुत अच्छा नेटवर्क है अपने यहाँ पे, स्पेशली इन द शुगर इंडस्ट्री। तो वो महाराष्ट्र के बहुत फायदे में रहा एंड दैट इज वाई महाराष्ट्र का जो शुगर इंडस्ट्री है दैट इज वेरी वेल डेवलप्ड, ओके? दूसरी उत्तर प्रदेश की बात, तो वहां पे तो अच्छे खासे सॉइल्स आते हैं, यू हैव गुड अमाउंट ऑफ सॉइल्स, राइट, ओवर देयर इन उत्तर प्रदेश। सो एंड इरिगेशन भी, पानी बहुत है ना, गंगा है क्लियरली वहां पे, तो कैनाल्स का नेटवर्क बहुत अच्छा है वहां पे, दैट हैज सर्टेनली मेड वेल। बिहार के लिए अनदर प्रॉब्लम वाज कि इट हैज अ वेरी शॉर्ट क्रशिंग सीजन। शॉर्ट क्रशिंग सीजन माने बिहार का प्रॉब्लम वाज कि बिहार में क्लाइमेट की वजह से जिस तरह का केन बनता है उसको आप बहुत देर तक, वो जल्दी ड्राई आउट हो जाता है, ओके? तो यू हैव टू, एक बार आपने उसको हार्वेस्ट कर दिया तो फटक से मिल लेके जाना पड़ेगा उसको, अदरवाइज फिर उसका सुक्रोज कंटेंट कम हो जाता है। महाराष्ट्र में वो फंडा, वो वंस अगेन लाइक आई टोल्ड यू, बिकॉज द कोऑपरेटिव सेक्टर एग्जिस्ट, द प्रोसेसेस आर सो स्ट्रीमलाइंड कि महाराष्ट्र में एक तो बेसिकली हमारे यहाँ जो शुगर केन बनती है महाराष्ट्र में, उसका सुक्रोज कंटेंट भी हाई होता है, ऊपर से द प्रोसेस इज वेरी क्लियर कि एकदम डिसाइडेड एंड टाइम टू टाइम प्रोसेस होते हैं कि यहाँ से इतना हार्वेस्ट होगा और वहां पर वो मिल में उस दिन उतने इतने घंटे में मिल में चला जाएगा, तो वो बहुत इजी प्रोसेस हो जाता है अपने लिए, ओके? सो योर आंसर शुड आइडियली बी उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र, दैट शुड बी द आंसर। वील गो विद उत्तर प्रदेश एंड बिहार, but the current status is Uttar Pradesh and Maharashtra. Which one of the following is a rabi crop? Gram, millets, cotton या rice? ग्राम इज द रबी क्रॉप। रबी क्रॉप्स की खासियत क्या होती है ना, एक तो वो विंटर में आप क्रॉप लगाते हो, ओके? तो क्लियरली वो थोड़ा सा पानी उसको यूजुअली बहुत ज्यादा नहीं चाहिए रहता है, सॉइल्स उसको वेल ड्रेन्ड वगैरह चाहिए होते हैं, यू डोंट वांट दो सॉइल्स व्हिच आर गोइंग टू कीप द वाटर एंड वाटर लॉक कंडीशंस वगैरह नहीं चलेंगे उसको, कूल टेम्परेचर्स चाहिए होते हैं यूजुअली मैच्योरिटी के लिए एंड यूजुअली सबसॉइल मॉइस्चर पे ही काम चला लेता है रबी क्रॉप्स, ओके? दैट इज व्हाट रबी क्रॉप्स आर। ये बाकी के जो है कॉटन, राइस, मिलेट्स, ये एक तो समर वाले क्रॉप्स है, मतलब जून में वगैरह हम जब बारिश आती है तब उसका प्लांटेशन वगैरह करते हैं, सो वी आर ये तब के क्रॉप्स है एंड देन क्लियरली हर किसी के डिफरेंट कंडीशन है, बट दिस मोस्ट ऑफ दीज रिक्वायर अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर एंड हॉट वेदर, हॉट क्लाइमेट की जरूरत होती है उसको, ओके? तो रबी क्रॉप्स आर विंटर क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स आर गोइंग टू बी समर क्रॉप्स, सो हियर वी आर गोइंग विद ग्राम एज द रबी क्रॉप, ओके? ऑल राइट,
Next question 143. Who discovered the coffee plant? Okay, we are discussing who discovered the coffee plant. कॉफी का वो, अरे वो फेमस स्टोरी कॉफी की, वी हैव ऑप्शंस एज गांधी, अकबर, खाजा एंड कल्दी. कल्दी नाम का एक बंदा था, इथियोपिया में डिस्कवर किया था हमने कॉफी को. तो कल्दी नाम का एक बंदा था, ही वाज अ गोट हर्डर. ओके, तो ये बंदे ने क्या ऑब्जर्व किया कि उसके गोट्स को वो जब ऐसे घास चराने लेके जाता था, तो एक सर्टेन प्लांट के बेरीज खा के उसको लगा कि उसके गोट्स बहुत एनर्जेटिक होते थे एंड रात भर जागते वागते थे एंड सो ऑन सो फोर्थ. ओके, तो उसने वो नोटिस किया पैटर्न, एंड देन ही आल्सो हिमसेल्फ ट्राइड आउट दोस बेरीज एंड ही रियलाइज्ड दैट इवन ही फेल्ट वेरी एनर्जेटिक आफ्टर ईटिंग दोस बेरीज. तो वो स्टोरी है कॉफी की, एंड दैट इज हाउ द कॉफी प्लांट वाज डिस्कवर्ड. ओके, सो वील गो विद कल्दी. वी आर गोइंग विद ऑप्शन डी, दैट इज द बंदा, दैट्स द गाय. Okay, let's go to question number, last two questions of the day. Question 144, choose the correctly matched option from the following. Prosperous farmers from Punjab, regular wages. Farmers who depend only on rain for growing crops will have more days of work and better wages. Landless rural laborers, high support prices for their crops. No. Adivasi from Narmada Valley to fulfill livelihood. D. Adivasi from Narmada Valley to fulfill livelihood. That's going to be your answer. See, people, prosperous farmers from Punjab will usually have their own land. उनका खुद का जमीन होगा और वो खुद की जमीन खुद करेंगे. मे बी वो एग्रीकल्चरल लेबरर्स को हायर करेंगे, उनको वेजेस नहीं मिलेंगे. ओके, ये जो खुद के फार्मर्स है, लेबरर्स को वेजेस देंगे, लेकिन ये फार्मर्स जो प्रॉस्परस फार्मर्स है, लैंड ओनर्स है, उनको वेजेस नहीं मिलते. ओके, उनका एम होता है कि वो अच्छा खासा कम कीमत पे एग्रीकल्चरल लेबरर्स को हायर करे and higher support prices lay for their crops. That is the aim, that is the goal of the farmers. Okay, from Punjab, let's say that is the thing that we are looking for. तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया. ओके, बी वाला ऑप्शन देखिए, फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. तो उनका ऑप्शन होगा कि उनको तो शायद मे बी अभी, इफ दीज आर पीपल हु ओन द लैंड, जो लोग रेन के ऊपर डिपेंड करते हैं क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, इफ दे ओन द लैंड देन उनको वेजेस नहीं मिल रहे क्लियरली, एंड दे विल वांट कि एक बार बारिश आ जाए ना, तो उनका एम होगा कि बारिश आ जाए तो फटक से क्रॉप ग्रो कर ले. ओके, एंड क्लियरली दे विल होप फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल. इफ द रेन इज गोइंग टू बी अ लिटिल irregular or something, then they'll hope for some kind of irrigation facilities. Okay, that is what they are going to depend on, but they are not going to try for more days of work or better wages and all. ये सब कुछ नहीं ट्राई कर रहे वो. ओके, look at landless rural laborers. We are looking at rural landless laborers. उनको high support prices नहीं. We already said ना, high support prices ये पंजाब के farmers का scheme है ना. High support prices should be that पंजाब farmers scheme. So मतलब उनको चाहिए, उनका गोल है. landless laborers को चाहिए कि उनको ज्यादा दिन का काम मिले, because उनके पास land नहीं है, and वो जो इकलौता जॉब करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी फार्मिंग. ओके, तो उनको चाहिए कि उनको ज्यादा दिन काम मिले, सिर्फ सीजनल एम्प्लॉयमेंट ना मिले, पूरा साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में काम मिल जाए, एंड बेटर वेजेस मिल जाए. ओके, उसके लिए बेटर वेजेस मिल जाए, ये उनका काम होगा. ओके, दिस इज व्हाट देयर गोल इज गोइंग टू बी. सो लैंडलेस रूरल लेबरर्स डू नॉट रिक्वायर हायर सपोर्ट प्राइसेस, दैट इज ऑल्सो नॉट व्हाट इज. तो ये तीनों स्टेटमेंट्स ऊपर के जो तीनों मैच द फॉलोइंग है वो रॉन्ग है. ये वाला बिल्कुल सही है कि जो आदिवासी है फ्रॉम द नर्मदा वैली, वी आर लुकिंग एट पीपल हु मे बी डिस्प्लेस्ड बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और स्टफ लाइक दैट. तो उनके पास ना खुद का लैंड है ना कुछ है, तो वो जो भी लैंड, जो भी काम मिलेगा, वो तो खुद का पेट पालने के लिए कर रहे हैं. राइट, दे आर डूइंग इट फॉर लाइवलीहुड, सस्टेन करने के लिए, खुद को सस्टेन करने के लिए वो ये सब कर रहे हैं. तो उनके लिए वो वेजेस कम मिले ज्यादा मिले, दे आर स्टिल गोइंग टू वर्क बिकॉज दैट इज द ओनली वे दे कैन अर्न मनी. So Adivasi from Narmada Valley is going to be that option for you. Okay, that is correct. They are trying to earn their livelihood. That is what they are doing. 145, last question of the day. Minerals are deposited and accumulated in the stratas in which of the following rocks? Sedimentary, metamorphic, igneous, or none of these? We are going with sedimentary. Strata किस rock में मिलता है आपको? Layers strata किस rock में मिलता है? इकलौते sedimentary में. Okay, तो sedimentary rock में जो layers होते हैं, तो वो जब लेयर्स बनते हैं तो उसमें वो मिनरल जैसे फ्लैट डिपॉजिट्स में डेवलप हो जाते हैं. ओके, दैट इज, तो ये सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स में हो सकता है. अगर इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिनरल्स पाने हैं, तो वो आपको ऐसे लोड्स में या वेन्स में मिलते हैं. ऐसे रॉक के अंदर जो भी फॉल्ट्स होते हैं, क्रिवाइसिस होते हैं, ब्रेक्स होते हैं, फ्रैक्चर्स होते हैं, उसके अंदर वो मिनरल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, एंड देन यू फाइंड देम इन वेन्स और लोड्स और समथिंग लाइक दैट. ओके, तो इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स में आपको यूजुअली वेन्स या लोड्स में मिल जाता है. ओके, मिनरल्स, whereas only in sedimentary rocks you will find them in strata.
Okay, सिर्फ sedimentary rocks में आपको strata या layers में मिलता है. Is this good, Rinku? Okay, we end the lecture here. Thank you very much. Do you have any questions? If you don't, then we'll. Sampriti, do you have a question, bacha? Yes, No? Okay. yes, ma'am. You have a question? You don't have a question? Okay, Ma'am, is no there worries. your lecture at evening time? No, on Saturdays and Sundays I do not have a lecture because when we conduct the classes on offline, we have tests over there going on, right, on the weekends. So we do not have a lecture. I do on Saturdays and Sundays. I usually solve the papers that, and paper solving also clears a lot of concepts, right? So that we don't have an active lecture where I'm discussing a proper topic or something. This is over multiple topics then. Okay. Yes. All right. Okay. Then I'll stop here and thank you very much. And you guys take care and have a great weekend. Okay. Bye. Thank you.